Good afternoon, everyone, and welcome to match number three of this Rockfort City's Premier League T20 of today's match today. The last match of today's encounters, and the third match is between SS Brothers and Champions 11. The first ball is a wide, which will be bowled by JK to Akash Kumarji, and Karthik is a non-striker. Full 20 overs match in progress here. Stroked very well. That has gone towards the boundary. That has been stroked very well. The front foot was really not up to there, but what a way to start off the proceedings with the bat. First to divide. So 5 runs on the board for Sanju அங்கே சிவா இங்க as brothers. So well in control while trying to just dig that out almost from a Yorker land outside off stump. And in the very previous match also. So JK started off the proceedings for SS Brothers. This is a little bit of a very intriguing cricket that's been on display here. He is bowled him absolutely right through the gate. So much happening in the very first over. First is a wide, then a boundary. He was almost trying to squeeze it, but the next one he says, "No problem, brother. Here is the spin. Here is the turn. You miss, I hit. Works." Five for one. It's in the air. Has he cleared the ropes? Yes, he does. What a lovely hit. What a good connection from Sanju Dada. Dada is there. Why to worry when Dada is there? It has gone to perfection. And the score is now 11 for 1. This is lovely bit of connection taken outside off stump. This is lovely connection. What a good connection that was from Sanju Dada. 4 balls and 11 runs is 11 for 1. Is everything happening in the very first over. It's a wide boundary, then a wicket, then dot, then 6 with 2 more balls remaining. This has become a hell of an interesting over. And now SS Brothers on to 11 for 1. And Champions 11, they must be thinking, well, what's happening here? Are we trying to play some schoolers cricket? They really need to get some serious here. Because they floundered and they are leaking runs in the very, very first over. Now on a change of curtness, change of equipments here of the clubs, and this might just be working in their favor itself. Fifth ball of the first over, flighted delivery outside off some again, trying to use the long handle on the same corner.
but doesn't get the connection. A small bit of an appeal from JK, but the umpire negates it. So one more ball remaining. They are going for the full Monty here. Really needs to be careful. Last ball of the first over. Off spin delivery on the off stump, wanting to deliver it. He take a single, but it has been negated from the non-striker. First over done and dusted. SB Brothers are 11 for 1. ஒன்றே கொஞ்சம் அப்படியே And that's a definite boundary. Score moves on to 15 for 1 for SS Brothers. Outside off stump slashed it away. And in this afternoon, when you had your tummy full with some very lunch, for some very good lunch on your belly, I'm sure those runs seems like an after cake. Seems like that some ice cream has been fed, and like an icing on the cake. It's a very good lunch, I believe. And now Murali, I call him Murali Dharan. Again, wanting to slash using the long hand deliveries of fielder, but he will just be a spectator. Jersey number 18 has to go towards the sweeper cover and retrieve the ball going. The ball is going very thick and fast in this very second over, and they're already ladder hunting here. Our champions 11, they won the first match of the day today, and but now against now SS Brothers, who have won the previous match today, are now not into a very good position here. But it's a long way to go. The story is long way to be told. It's just 9 balls into this match, so too early to predict the future. Very short delivery. It's in the air. The connection has not been good. Is there a fielder settling underneath it? And he takes a brilliant running catch. That is a very good catch. Really have to appreciate the kind of elevation, the kind of judgment, the kind of running that he done to take that catch. And Murali is very happy as he takes the first wicket in his very first over. And as his brothers are 19 for 2. That was a brilliant running catch to finish off the matters and to give the Murali his first wicket. He's excited. Everyone is excited, even me. Because this toe end catches, these running catches are never easy. And every time these running catches are done behind, I was saying yesterday. Also, it reminds me of the 1983 Prudential Cricket World Cup at the Lord's Cricket Ground, at the home of cricket, to dismiss him. And after that, the rest was history. And India won the final for the very first time of the World Cup and lifted the Prudential World Cup at the Lord's balcony. So what a moment that was, which changed the future of Indian cricket. And today it's the number 1 sport in India and the second biggest in the world. A 5th ball from second from Murali. He is 1 of 8 to his bowling figure. Dot delivery after the wicket. It's Anand Jaddu will be facing the last ball of the second over from Murali. Short delivery
wanted to flick the ball. He will get direction. He'll get a very, very good placement as the ball is going towards the long on fence for a boundary. So 3 boundaries, 2 dots, a wicket. More or less over has gone from very good to being a very dramatic one to a spoiler. 2 overs done and dusted at 23 for 2 on the board for SS Brothers versus Champions 11. So, 2 ओवर के बाद एसएस ब्रदर्स 24 2 विकेट के नुकसान के बाद जेके की ये गेंद हल्की सी पुश की थी. कोई स्लिप मौजूद नहीं है वहां पे, लेकिन उनको 1 विकेट जरूर मिला है. मोरली का जो जो पिछला ओवर था, उनका पहला ओवर क्या क्या ओवर गया है. पहले 2 बाउंड्री, फिर डॉट, फिर 1 विकेट आई थी. क्या कैच पकड़ा था उन्होंने, बिल्कुल संतुलन के नियंत्रण उन्होंने खोया नहीं. जैसे वो आगे आए थे बॉल पकड़ने के लिए, इस बार फिर से उठा के मारा है संजू दादा ने. कैच हो सकती है, हो गई है कैच. संजू दादा बाय बाय टाटा, जाइए आप वापस. ये खेल, ये शॉट मारने की जरूरत ही क्या थी आपको. और जेके को मिलेगा अपना दूसरा विकेट. एसएस ब्रदर्स बिखर रहे हैं ताश की पत्तों की तरह. They are just falling like 9 pins. This is really, really not good cricket. 25 रन के बाद 3 विकेट का हो गया है पतन. एसएस ब्रदर्स ये स्टार्ट रन जरूर आए हैं, लेकिन 3 विकेट भी खो चुके हैं. और चैंपियंस जो होंगे वो एक बेहतरीन कदर पे होंगे. उनके लिए कितना ऊपर उठा के मारा था ऑफ साइड के ऊपर, लेकिन क्या जज वो कैच पकड़ने के लिए. एसएस ब्रदर्स 25 रन 3 विकेट के नुकसान पे. ड्रामेटिक, एब्सोल्युटली ड्रामेटिक. क्या उन्होंने ले लिया है कैच. हैज द कैच बीन टेकन, has the catch been taken. He's asking someone to come and shake that one, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने बिल्कुल बाउंड्री एज पे लेके ये कैच पकड़ा हुआ है. बहुत ऊपर गई थी, बहुत ऊपर गई थी. वो बोल रहे मैं वहीं पे खड़ा हूँ, मैं वहीं पे खड़ा हूँ. आप एक बार आके देख लीजिए, आप जाके एक बार उसको चेक कर लिए. हाँ, ये विकेट चला जाएगा. अंपायर ने आके चेक कर लिया है और बोला है कि हाँ जी, चलते बनिए सर जी. सो राकेश RSCA अपना पेविलियन का रास्ता मापते हुए फिर से ये शॉट ऊपर मारे. मुझे पता नहीं 10 ओवर का खेल है कि 20 ओवर का, क्योंकि ये लोग ऐसे खेल रहे जैसे ये बिल्कुल 10 ओवर या 5 ओवर का खेल हो. इतना ऊपर से मारने की क्या जरूरत है. रणनीति समझ में आती है कि रन आपको चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे अगर आप शॉट्स मारोगे तो आप अपना ही गड्ढा खोद रहे हो. एसएस ब्रदर्स 25 रन 4 विकेट के नुकसान पे, और जेके को मिल गया है उनका दूसरा विकेट.
ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೂರ್ತಿ ಮುರಳಿ ವಾ ಓವಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾ ಲೆಫ್ಟ್ 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 ಮೂರು ಸೈಜ್ ಸೈಜ್ After ಅದೇ 3 overs, the score ಮುರಳಿ for ಬಾ SB Brothers, or SS Brothers, I would say rather, is 26 for 4. They have themselves to blame. You can ಇಲ್ಲ see ಅದೇ JK, 3 wickets ಇಲ್ಲ for ಅಭಿ 14 ಫೋರ್ runs in 2 overs. Anand ಹಾಂ Jaddu, ಫೋರ್ 5 of 3. Manikandanji, 1 of 1. But out of those 3 wickets, definitely they have themselves to curse on, because those are really not shots that were definitely needed to be played in the air, and so much gifting away the wickets. Those were being safely pouched. Murali has the ball in his hand, outside off stump, again in the air, played, but over the region of the cover ಈಗ field and on towards the ಅದ ಸೊನ್ನೆ sweeper and the deep end boundary for 4 runs. Vani Kandanji will pick up 4 to his name, moves on to 5 of 2, and now SS Brothers are on to 30 for 4 with the boundary. Morley so outside off stump. He needed to spin the ball, but didn't spin, giving him so much ample of time to room to take up that uppy shot down towards that boundary. These are really easy pickings. And in your initial slots, when the runs are there in the offering, they will definitely take it. But on their minds, they know that they have also lost their partners, which are 4 of them within not even 5 overs have been bowled. Almost an inside edge now onto the stumps. This would have been a very dreadful side had that been the 5th wicket down. Again, outside off stump, been defensively played off the front foot by Manikandanji on towards the cover. No run. Back to so hat trick of dot deliveries here. ಮಾಡಲೇ Again, no spin at all. It was very quick through the air outside off stump. He looks at the umpire who says, "It's okay, my friend. I'll take it up for you." Got from early again. That stroke making has been good for Manikandanji, especially ರೈಟ್ from ರೈಟ್ that ಮಾರಿಗೆ stroke that you've seen, which has given him 4 runs ಉಳ್ಳ ಉಳ್ಳ in that very first over. And after that, he's been looking very confident. So that gives ಸಂಜೀವ್ that ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ gives you ಸಂಜೀವ್ so ಎಲ್ಲ much of ಬಾಲ್ ಡೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ and motivation onto yourself. Then ಬ್ಯಾಟ್ಲ now ಬ್ಯಾಟ್ಲ the right-hander Anand Jatu will be on strike. It shows much of the equation that when the left-hander and the right-hander in progress, you again need to settle the scores of that fielding so very much. And that's why, as much as possible, those singles really needs to be minimized. Or sometimes you really feel that you're doing some kind of a time wasting there. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ No run there. ತ್ರೋಯ ತ್ರೋಯ 4 overs remaining. Left-hander Nikandan G will be on strike in the next over. It's 31 for 4 on the board for SS Brothers. JK will continue his third over of his spell. 4 ओवर के बाद एसएस ब्रदर 31 4 विकेट के नुकसान पे बहुत ज्यादा फ्लाइट नहीं है, हल्के से पुश किया अपने 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 थाइस से, अपने हिप्स से मैं बोलूंगा। मणिकंदन जी 6 रन पे खेलने अपने व्यक्तिगत स्कोर बहुत ज्यादा फ्लाइट करते नहीं है गेंद को जेके, लेकिन देखिए विकेट्स, देखिए 3 विकेट मिली है, थोड़ा सा फ्लाइट किया था और उनके गेंद पे जो चार्ज करने की गतिविधि थी उसको रोक लगाते हुए बहुत ऊपर चली गई थी। और कैचेस ये देखिए, ये फ्लाइट दिया है, इस बार उठा के मारा है, वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है, उन्होंने वो देख लिया था, उन्होंने वो भाप लिया था और जैसे ही वो था उनके आग में, मणिकंदन जी ने उठा के लॉन्ग ऑन की दिशा में 6 रन इनफैक्ट ये छक्का है, चौका भी नहीं है, छक्का उनको मिल जाएगा अपने नाम। और ये एक बेहतरीन स्ट्रोक
ये देखिए थोड़ा सा फ्लाइट, हाँ मिडिल एंड ऑफ पे आई थी गेंद, और फील्डर नहीं था मौजूद, उन्होंने देख लिया था और उठा के कुछ अच्छा 6 रन उनके खाते पे मिल जाएगा। अभी 1 रन मिलेगा फिर जैसे, बस और आनंद जद्दू को देंगे वो स्ट्राइक। स्कोर में बढ़ोतरी हो रखी है, 38 हो गया 4 विकेट के नुकसान पे। इनिशियल फ्यू ओवर्स काफी काफी ड्रामेटिक हुआ है, यहाँ पे सिक्सेस देखने को मिला है, फोर्स देखने को मिला है, स्लाइडर्स देखने को मिला है, कैचेस होते होते बच्चे देखो मिले, वाइड्स देखने को मिले, लेकिन विकेट्स तो भरपूर, 4 विकेट्स। ये देखिए फ्री से मुरली फ्लाइटेड डिलीवरी और थोड़ा सा मिस टाइम कटे हुए शॉट, दोनों फील्डर्स दे रहे हैं चार्ज, लेकिन बॉल के पास एनर्जी, हाँ जी, रोप्स के बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे जाके उन्होंने हाथ से रोक दिया और उनके कलीजे के उनको पकड़ लेंगे। देखिए रूम बनाया था, लेकिन जहां एग्जैक्टली जानी चाहिए थी गेंद वहीं गए नहीं है। तो ये आपके पॉइंट और गली के ऊपर से चली गई थी। ये देखिए लास्ट मोमेंट में उन्होंने पैर से उनको रोक दिया था, और तो फील्डिंग काफी अच्छी हुई थी। कपल ऑफ रन जरूर मिलेंगे यहाँ पे। 9 रन ऑलरेडी इसी ओवर में, फुल टॉस ऑन द लेग साइड, और बस एक हॉकी का वाह स्टिक भी अगर उनके हाथ में दे देते ना, कि वो एंड उसको लगा पाते रन के लिए फाइनल की दिशा में, और जे के ज्यादा नाखुश नजर। अयो से முறை உள்ளே போடுறா எங்க குனியா நிக்கிறா மோர் உள்ள வா மோர் உள்ள வா. போடு போல ஓ பாலர் ஹே டேய்
தப்பாடா இது. ஏன்டா ரைட்டு தான்டா, ஏன்டா? Murali 2 for 18 in 45. நல்ல ஓவர் போட்ட. These are 49 for 5 after 6 overs. அவனே வரலையே. SS Brothers 50 5 विकेट के नुकसान पे 6.2 ओवर में, और संजीवन आ गए अपने पहले ओवर बॉलिंग करने के लिए चैंपियंस 11 के लिए, और काफी अच्छा वो चल रहा है पैसेज ऑफ प्ले मैं कहूंगा। यहाँ पे उन्होंने 4 विकेट खो दिए थे बहुत जल्दी, फ्लाइट डिलीवरी फुल टॉस ऑन टू हिम, काफी जल्दी से ये विकेट ले लेते दोनों टीम्स। आज उन्होंने एक एक जीत दर्ज की है अपने खाते में। एसएस ब्रदर्स रिसेंट मैच उन्होंने जीता था, और चैंपियंस 11 ने भी सेम टीम के खिलाफ उनका पहला मैच आज सुबह का जीत लिया था, तो दोनों ही कॉन्फिडेंस साइड है। सो ये मैच देखने को मिलेगा, so जो भी आज ये मैच देखेगा so should be definitely the champion of the day, I would say. And Champions 11 as of now they are looking like a very very champion outfit, और काफी शॉर्ट डिलीवरी, देखिए कितना टाइम मिल गया था उनको बैट को ऐसा फ्लैट बैट करके थोड़ा सा हिप्स से उनको फाइनल की दिशा में उनको दर्शाते हुए एक रन मिल गया है श्रीधर को, और देंगे स्ट्राइक मणिकर्णन जी को जो है 15, श्रीधर को स्ट्राइक देंगे, माफ कीजिएगा, 5 नॉट आउट ऑफ 5 है अभी, 3 रन आ चुके इस ओवर में। आखिरी गेंद इस ओवर का थोड़ा सा बॉल के ऊपर से जाके जल्दी से मारने की कोशिश की थी, लेकिन टैप होके पॉइंट की दिशा में चली जाएगी। 7 ओवर के बाद एसएस ब्रदर्स 52 5 विकेट। मुरली எது பண்ணாதண்ணா ராஜேஷ்
விடாதீங்க விடாதீங்க, போடுங்க. आठवां ओवर कर रहे मुरली, 2 विकेट அடிச்சு लेके 26 रन ஒன்னு ले ஒன்னு चुके போனா थे वो பரவாயில்ல போ. 20 गेंदों में। पहला गेंद 4 रन के இல்லடா लिए जा ஒன்னு चुकी போனா है। பரவாயில்லடா. मणिकंद जी 20 रन नाबाद 18 गेंदों में। போடு. तो ये काफी स्लो प्रोसेस ऑफ पेसेस ऑफ प्ले चल तो रहा है, लेकिन रन्स भी थोड़े से बतौरे उन्होंने, ये थोड़ा सा हल्का सा ड्राइव करते हुए, ये देखिए। और लेकिन रन्स भी काफी ठीक एंड फास्ट आए हैं, क्योंकि अब देखिए करंट रन रेट अभी भी 8 रन से नीचे है, लेकिन डिस्पाइट இரு लूजिंग இரு பாத்து. विकेट्स वो लोग अभी भी अपने आप को जिंदा रखे, ये थोड़ी अच्छी बात है। போடு அப்படியே क्योंकि அடிக்கல போடு. अगर अगर उन्होंने उनको ढीला भी कर दिया तो फिर भी वो वो थोड़ा सा अपने इक्वेशन में बढ़ोतरी ले सकते हैं, क्योंकि அதான்டா. चैंपियंस इलेवन ने काफी अच्छी, ये देखिए खूबसूरत बॉलिंग, पेस था उस गेंद में, बिल्कुल भी रूम नहीं दिया था उनको खेलने, आगे जाके उसको खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बैट उसमें नहीं लगा पाए। तो डॉट डिलीवरी, इस ओवर में 5 रन आए हैं। கச்சே. आखिरी गेंद उठा के मारा है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर स्पेक्टेटर बन जाएंगे। जाइए இல்ல जाइए, கரெக்டा அந்த ஒரு ये பாலுக்கு जो है போறான். ना कोकोनट ट्रीज है, उसके पीछे ढूंढना पड़ेगा, या तो ढूंढना पड़ेगा या तो नया बॉल लानी पड़ेगी, ये काफी दूर उसको पहुंचाया है, रिप्ले देखने को बनेगा। देखिए देखिए, फ्लाइटेड डिलीवरी मन पहले ही बना चुके थे, और जैसे ही फॉलो थ्रू कंप्लीट किया, ये गेंद काफी दूर गई है। मैंने शोले की मूवी देखी, जब जब ये पहाड़ दिखता है ना, तो शोले की मूवी जरूर याद आती है। मैं इतना मूवी बफ नहीं हुआ, मोर इनटू स्पोर्ट्स, मैं ज्यादातर क्रिकेट देखता हूँ। ये जब ये पहाड़ देखता हूँ, शोले की मूवी याद आती है, कि जैसे गब्बर है, वो है। तो ये दैट्स अ वेरी पॉपुलर मूवी इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। लेकिन यहाँ पे भी पॉपुलर होने की कोशिश कर रहे हैं एस एस ब्रदर्स। 8 ओवर के बाद 63, 5 विकेट के नुकसान पे। Jersey number 17 is Sanjeevan. He will come on to bowl the 9th over, wearing a yellow bandana. He sports a very different personality. And left arm spinner, flighted delivery outside off stump, wanting to squeeze that ball, looking at his like it's looking at his partner Manikandan ji, கேட்ச்ரா. who says, "I want to relax a bit as you try and play those balls of Sanjeevan." போடு But போடு as போடு those போடு flight bowling deliveries, and since a left-hander, it's always an opportunity to flight that ball. He sometimes looks like a Chinaman. Also, கேப்டா the கேப்டா. the way he grips the ball from the surface, and the way he loops that ball, doesn't spin the ball too much, as I've seen from the last matches. This time it's a quick delivery. It's a huge appeal, but the umpire extends his left hand, saying that it's going down the leg side. So everyone stops right in the middle and not looking at the umpire, looking at where the ball has gone. Appeal, and the score will remain at 64 for 5. It has actually gone towards the umpire after they have spoken something a bit on that appeal. They feel that it can be very close, more than it looks at the eye. That's not the one actually, but it has gone upstairs
for the LBW and not on the six. That's a very very clear six. So no questions asked on that six. It can be given 6 plus 4. I would say that has gone so much back from that, but as of now, it's the job of the third umpire to look whether it's an LBW or is the batsman surviving right in the middle of that bowling of Sanjeevan. As it was a little bit quickly bowled, and we've seen this job of the umpires is such a thankless job. Tell you, कभी कभी ये बहुत ही एक ऐसी जॉब उन्होंने पकड़ी रखी है जी कि बहुत लोग उनकी तारीफ करते नहीं, लेकिन एक 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 ऐसी जॉब है ना, थोड़ी सी गलती करो सब लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, नहीं तो वो खिलाड़ियों पे ही कंसंट्रेशन ज्यादा जाता है. And there you go, a little bit quicker onto him, wanting to defend that ball. Probably must have gone towards the leg side, and that's what the umpire is hinting about the ball going down. But they certainly wanted to go upstairs to have a review and check on the ball. I think that more the zoom up equation, that magnifying zoom up, so it should help the cause. Yes, yes, there you go, front to prop that. But the bounce is definitely on the middle, but I feel it has gone down the leg side also, and I feel, and I'm with the decision of the umpire as of now. This angle should definitely help to look at the trajectory which is perpendicular, that pad in perpendicular and in adjusting with the stumps behind. And then you can also look at the bat angle, where it is coming and where it has actually finished. Sometimes that bat angle and also the finish of the wicket keeper will tell you much of the story. And no, so that's not out, and the umpire wins the battle, I would say, versus a Champions 11. So it's a very, very good umpiring. So very well done, umpire. You get some brownie points. Sanjeevan again to continue this time. It's an over pitch delivery, drives it very beautifully. The call is for the second one, and they will get it at ease as both the batters look at the fielder, which is at the sweeper cover. There is something that non-strikers asking the fielder whether it's a clean fielding. They angle it off this camera, not being able to understand because they've just focused on the pitch. The camera has not been rotated towards the action side. Sanjeevan again, short delivery, hoists it to the ball towards the fine leg region, and I think it will just be a single with two more balls remaining in this Sanjeevan's over. If you can remove the tag from the bottom of the screen, the third umpire review is written. Yeah, thank you so much. It has now gone off. I can clearly see the name of the batsman now. Fifth ball of the ninth over. Flighted delivery from Sanjeevan, very well played inside out stroke from Sridhar to exchange numbers again with Manikandanji, the left-hander. Individual scores on 12 of 9. Manikandanji on 24 of 23. This is a very nice race. This, if they can squeeze out a very good partnership, then they can come back very easily despite losing 5 wickets on the board. Our SS brothers. Last ball of the ninth over. Flight delivery again. It has been driven, but there is a player stationed right where the ball has been sent by Manikandanji. End of the over. 9 overs ball. It's 68 for 5 for SS brothers versus Champions 11. You are following the Rockfort Cities Premier League, which is live on this professional cricket competition, the Universal Cricket Series website on YouTube. I'm sure you've been following all these actions very properly. And three matches again coming up tomorrow. This is the last match of the day, and tomorrow right from 7:25, then 10:45, then 1:45, we have three great matches. Grandiose Cricket Club versus Crazy Cruise, Lords 11 Sandos CA versus Crazy Cruise, and the last match of the day, Grandiose CC Cricket Club versus Lords 11 Sandos CA at 1:45 p.m. So don't forget to tune in tomorrow also. It's going to be Sunday, but please do wake up early, because it's cricket, isn't it? We love this game of cricket, to watch the match right from the very first ball till the end, and don't want to miss anything. Blink your eye and something happens, because this format of the game
really doesn't allow you any opportunity to blink and think and rethink, because so much of strategies, so much of thinking going on behind the batting, bowling, fielding, shot delivery. This time from Shiva Kumar on to Sridhar. Off the backward plays the stroke, and they'll ஏய் exchange numbers with Manikandan G. The left-hander moves on, is on to மாறிக்க hit மாறிக்கிறா மாறிக்கிறா 24, and Sridhar moves on to 13 of 10 balls. And 5 balls away from what will be the halfway of the first innings through here. As his brothers, as of now, you can see the projected கரெக்டா score is அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படியே இருக்கட்டும் 151. So மூர்த்தி இப்படி வா if they can even go it, and remotely closer onto 145 or 160, then they will say that we have done a fair bit, போடு சிவா because பார்த்துக்கலாம் போடு at 5 down, they are looking at a very, very tough position and some very outrageous and shots which are really, really not required initially were played by the batters, which really led to the downfall, மூர்த்தி போடு and போட்டுட்டோம் those போட்டுட்டோம் initial wickets which fell down on 9 pins and really not helping the cause. Shiva Kumar பாலு onto பாலு Manikandan G. This was இது angle வரேன் இது outside off மாறிக்கோ some minimal of footwork from நீ வா Manikandan G. Was trying to look at the batter, but நீ he was வாடா just looking at the opposition. நீ மாறிக்கோ These are all healthy benders which you see at the ground ம் at the ground of cricket, and that's a game that we all love to follow, is it? So அந்த all பக்கம் fair and மாத்திக்க சொல்லு square. என்ன அபி Match is going on very well. This is a nice basis of play, as I've mentioned you before. Every time a ball just dries up, இப்போ every பண்ணலாம் சார் time a ரெடி score ஒரு has not பால் been ஏன் done, a கன்ஃபியூஸ் projected ஆகுறீங்க score comes down heavily from ம் 151. போடு It has come down to 148, and so that's how it is. So if you hit a mighty six and then continue doing so, it will keep on projecting upwards and சிங்கிள் போனா upwards. பரவாயில்ல போட்டு I have been a part of commentary panels where where an சிவா போட்டோம் சிங்கிள் unbelievably போட்டோம் scores keeps on raising up, and then இல்ல eventually they மூர்த்தி win உள்ள this வச்சுக்கோ match. I've seen matches being won from 10 for 5 to 16 from 6, also raking up to 70 and almost 300 and winning those matches comfortably. So it's all about your gameplay, it's all about mental fortitude. It's not that you've lost your wickets, you'll just come down and not do certain stuff. It's about just, carrying up your game, taking the game a notch higher, and then focusing on your game. And that's what cricket is all about. Shiva Kumar, fourth ball of his போலங்க 10th over, defensive, very, very well done, because it was little slower onto him. Uh, felt like he was a little bit in a two சிங்கிளோட minds whether to play that stroke or not, but just defended very well off the front foot was Sridhar. On to 13 of 11. Score remains on 70 for 5, with 2 more balls remaining in the 10th over. Short ball outside the off stump without any movement of the feet. Again, wanting to slash it through covers. No contact at all, and the ball will go on to the safe gloves of the wicket keeper. This is little of movement. There you can see so much of gap between bat and pad. In fact, I can minimize the word pad because there's nothing in there. Last ball of the 10th over from Shiva Kumar, wanted to hoik it towards a fine leg, but it will be a wide one on extra. What was a very good over will be now spoiled with that red circle down below. It's a grey circle actually. The colors keep on changing with every match. So 1.1 now a wide. So this generally happens when you feel that you are doing okay, and then suddenly the ball goes haywire. Last ball, I suppose, yes, it's a good ball, very good ball, very well played. Also straight down the ground behind the bowler. Put long on and long off fielder will join hands, but just one of them will have to throw the ball back to the pitch of play. 10 overs done, halfway of the innings is through, as his brothers are 72 for 5.
এইটা মোরা এইটা মোরা So after 10 overs, এইটা মোটিভ SS Brothers are 72 for 5. पी शिव कुमार के हाथ में गेंद है। काफी शॉट था ये, काफी शॉट था। देखिए उसको फ्लैट बैट करके मारने की कोशिश না कर रहे थे, 30 लेकिन बिल्कुल बैट के बिल्कुल बॉटम एज पे लगी और ये गेंदबाज को वापस मार दिया गया। হ্যাঁ বল রা हाँ, একদম थोड़ा মুড়ি से हल्की ऊपर आई। ये बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं है वहां पे बैट का देखने के लिए। श्रीधर 14 नॉट आउट 15 गेंदों में अभी। फिर से फ्लाइट डिलीवरी, ফিলিং इस ফিলিং पर फिर से कवर की दिशा में फेंक के मारा है। हैट्रिक ऑफ डॉट डिलीवरीज। फील्डिंग भी अच्छी हुई है यहाँ पे, और जो जो कैचेस उन्होंने पकड़े हैं उससे दर्शाया जाता है कि उन्होंने फील्डिंग पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखा हुआ है। इस बार फिर से हल्के हाथों से खेला। नॉन स्ट्राइकर मणिकंदन जी ऑफ द ब्लॉक्स होने में लिटिल लेट हो गए थे, लेकिन थोड़ा हल्का हल्के से उन्होंने पार्क में जैसे जॉगिंग करते हैं उसी हिसाब से जॉग करके वो रन कंप्लीट किया। एक रन भी का इजाफा हुआ वहां पे। एसएस ब्रदर्स 73 5 विकेट के नुकसान पे। करंट रन रेट अभी भी अच्छा है 6.84। अगर इसी को पकड़ कर रखते हैं या थोड़ा सा ज्यादा भी करते तो 150 के आसपास वो रख सकते हैं। अभी के लिए 140 145 के आसपास भी वो उस पर प्रकाश डाल सकते हैं वो लोग। लेकिन ये पार्टनरशिप्स होना बहुत ही जरूरी है। अगर एक दो विकेट्स और खो जाते हैं तो बिल्कुल बैकफुट पे आ जाएंगे एसएस ब्रदर्स। पांचवा गेंद 11 ओवर का बहुत ही क्विकर था आउटसाइड ऑप्शन, जिसको खेल दिया है मिड ऑफ की दिशा में मणिकंदन जी ने। पूरा फेस ऑफ द बैट दिखाया है। कोई कोई अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलने के लिए यहाँ पे वो लोग कोशिश कर नहीं रहे हैं। ये अभी ये पैसेज ऑफ प्ले वो लोग धीरे धीरे ही देख रहे हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि अभी कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 विकेट चले गए हैं। आप लोग थोड़ा रिपेयर वर्क कर रहे हैं श्रीधर और मणिकंदन जी। आखिरी गेंद 11 ओवर का। हाँ, पूरा अभी फिर से रक्षात्मक तक वो शॉट उन्होंने खेला, थोड़ा सा हल्के हाथों से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चली गई पार्टनरशिप 30-33 गेंदों में। और 11 ओवर के बाद अब ये स्कोर हो गया है 75 5 विकेट के नुकसान पे। So after 11 overs, SS Brothers are 75 for 5. Rajesh Sahib, அந்த batting. He has the ball in his hand, but that's Sanjeevan, I believe. The kind of spin that is in, but more than the spin, I feel it's the kind of bounce that is generated from the pitch that made Sridhar look in a very awkward position there to play that ball. Good ball, good ball. That's a mix of ball that he can do of his slips is Sanjeevan, that makes him doubly dangerous, whether to come off the front foot or off the back foot. But if he can spin the ball, then he can be very, very dangerous. This time, full toss played it right back to Sanjeevan, but it's not a cotton ball because the stroke was completed and ball took the edge from the pitch onto him. This time it's in the air, but there is a fielder. It just bounces in front of him at point. So no ball. And he also completes his over very, very quickly. You can see 4 balls has already been completed at the blink of an eye. Doesn't fly too much. Again, he gives bowling himself there some bowling there hey room. Will definitely get a single this time, as the fielder is little pushed backwards at Swipakawa at deep position for a single. And now over the wicket to the left-hander Manikandanji for the last ball of his third over and of the innings 12th. ஏ நீ உள்ள வாடா Trying to, yeah, so he has asked the cover to
the mid wicket region to become more squarish now, and also making some adjustments mainly on the onside. And you can see it also asks that man, a third man, also to come more generally up to him. Last ball. Good ball, very good ball right there on the money. Didn't fly the ball too much, but he was well aware of the situation, and that's why just played right on the front foot with very soft hands. 12 was done and dusted, and SS Brothers are 76 for 5. 76 for 5 are SS Brothers. Rajesh, none for 3 in 1.1 overs. He's bowling to Sridhar, who's on 17 of 24. Short delivery, hiked onto that ball. There is a protection, but the protection cannot be protected for a long time as he misfields, and probably he will blame on the bad bounce that he got right in front of him. But the ball has gone over the ropes for 4 runs. For after long, for after small passage of just singles and some couples, those that ball has finally gone towards the boundary, and which is right towards the long on fence. Yes, uneven bounces sometimes. Also, probably the ball has spun a little bit away from him, and that's why he couldn't judge the line of that ball. But eventually, 4 runs have been scored after some time. Now, Sridhar on to the 20s, 21 of 25, and the score on to 81 for 5 in 12.2 overs. Again, he has played that ball down the ground away from the catching or stopping position of Rajesh, the bowler himself. One wide, one boundary, one dot ball, a single. So kind of almost like a mixed emotions this over has. But this partnership has been very good here for SS Brothers. After the loss of the fifth wicket, I think around 30 partnership or 30 or around 35 runs partnership. Definitely for this at a projected score of 131, the fourth ball has been was being tried to grill towards the covers, but no run, and that ball actually got stuck. The ball got stuck in that surface which has been covered right on the other side. So it will be a dead ball, and they have to reball that. But it was a very good shot. But the ball got unfortunately stuck on that surface of the pitch, which has been covered with clothing. It has been hit down the ground. It is going towards a long off corner. There is no one, and it has been deposited towards the safest part of the ground where there is no fielder inside onto those grass banks and trees. This is a very, very healthy shot from Manikandan G. He moves on to plus 6 more runs for himself. The connection is so sweet. There you go. Just stood up there, waited for that ball to come, and climbed onto it for was a very good and a calculated risk. Not risk, I would say, very nice shot that was being done. Manikandanji moves on to 32 of 29 after that 6 and a score on to 88 for 5 in 12.4 overs. Just have to wait for there. Since the swap happened, probably there's little bit of injury, which is the video actually got stuck. I'm sorry for the technical reason, so not being able to understand exactly what happened. I feel there is an injury which has happened at covers or extra cover. They all have them rightly on the screen. Even the batters also have gone towards him, thinking of what actually happened there. Seems there is an injury. I hope he's doing okay. But at the moment, SS Brothers are 89 for 5 in 12.5 overs. ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குண்ணா ஐஸ் பேக்கு மேலே 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 சார் அங்கே போங்க அம்பைட்ட போங்க சார்
சார் ஸ்கோர்ட்டு போங்க சார், அங்கே ஐஸ் பேக் இருக்குது சார். ஆ ஆமாம் சார். வீங்கிருச்சு சார். ஆ இன்டர்நேஷ்னல் மேட்ச்லாம் இதை விட ஹார்டாக இருக்கும்னா பால் இப்போ நான் கையில் அசை பிடிக்கிறேன். ஜடேஜா கையெல்லாம் அப்படி 89 for 5. I hope the fielder is doing okay. One more ball remaining in the 13th over to be bowled from Rajesh. He has conceded 16 runs of the 11 balls that he has bowled. Not inning up to bowl to Sridhar. Right-hander Sridhar wanting to take it from way outside off stump doesn't connect. And it's a dot delivery. 13 overs bowled, 7 more overs more remaining in this contest. SS brothers are 89 for 5. तो संजीवन के पास है ये गेंद 14वां ओवर संजीवन करेंगे काफी अच्छी स्पेल ऑफ बॉलिंग ये यहाँ पे कर रहे हैं एसएस ब्रदर्स के खिलाफ फॉर चैंपियंस 11 माइंड यू ये दोनों टीम ने आज एक एक जीत दर्ज की है तो जो भी आज ये मैच जीतेगी तो ये नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी तो वर्चुअल नॉकआउट है तो काफी बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट नॉकआउट मैच यहाँ पे ये है फ्लाइट डिलीवरी थोड़ा आगे जाके खेला ये बेहतरीन गेंदबाजी चल रही है यहाँ पे मानना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बिल्कुल प्रेशर बना के रखा है कि ओकेशनली एक दो बाउंड्री जरूर आएंगे लेकिन ये सिंगल्स ये इनको बहुत ज्यादा हर्ट नहीं करेंगे शायद संजीवन का देखिए 11 डॉट डिलीवरी लेकिन एक भी विकेट अभी तक आया नहीं इनका ये स्पेल का आखिरी ओवर होगा तो इसमें ये जरूर चाहेंगे कि एक या दो विकेट जरूर चटकाए और अपने नाम एक विकेट ले और एस ब्रादर्स को थोड़ा सा और खतरे में और विमर्श में डाले दूसरी गेंद उनका चौथा ओवर का रूम बना के खेलना चाहते थे तीनों स्टंप्स एक्सपोज्ड ये थोड़ा सा अगेंस्ट द टर्न मारने की कोशिश कर रहे थे श्रीधर 22 पे है 28 गेंदों में तो थोड़ा सा अगर थोड़ा सा सहल के भी खेले ना तो मणिकंदन जी को स्ट्राइक देके थोड़ा सा ये खतरे से बाहर आ सकते हैं इस बार फिर से ड्राइव करने की कोशिश मणिकंदन जी ऑफ द स्ट्राइक होना चाहते थे सॉरी नॉन स्ट्राइकर से दौड़ना चाहते थे माफ कीजिएगा लेकिन कोई सिंगल नहीं बैक टू बैक डॉट डिलीवरीज संजीवन के द्वारा चौथा गेंद वाइट साइड ऑफ स्टंप इस बार एक रन जरूर मिले गेंद जारी है थोड़ा डीप पॉइंट में एक रन और ऐसे एक रन के बढ़ोतरी के साथ 91 पे 5 विकेट के नुकसान पर अभी ये 5वां गेंद होगी 14वां ओवर का ओवर द विकेट आएंगे फिर से वो लेफ्ट हैंडर मणिकंदन जी को बॉलिंग करने के लिए 34 नाबाद है अपने इंडिविजुअल स्कोर पे 21 गेंदों में और फ्लाइट एंड डिलीवरी इस बार फुल टॉस बन गया है ये और ये टप्पा खाने से पहले ही उसको ड्राइव कर दिया ऑन ड्राइव कर दिए इसको और जिसको लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक सिंगल मिलता हुआ अपना निजी स्कोर 35 पे पहुंच चुके हैं 32 गेंदों में मणिकंदन जी और स्कोर का इजाफा होते हुए 92 5 विकेट के नुकसान पे आखिरी गेंद 14वां ओवर का और संजीवन का स्पेल का लास्ट बॉल आउटसाइड एज लगा है बाहरी किनारा ये थ्रो बहुत जोर से आ रही है संजीवन की तरफ लेकिन ये दोनों आराम से क्रीज में पहुंच चुके हैं एक ओवर एक रन आखिरी गेंद संजीवन की 4 ओवर के बाद उनका
none of our 13 है बॉलिंग फिगर्स काफी अच्छा और इकोनॉमिकल बॉलिंग एनालिसिस है उनका एक विकेट मिला नहीं है लेकिन काफी खुश हो गए उनके अपने प्रदर्शन से 14 ओवर के बाद एसएस ब्रदर्स 93 5 विकेट के नुकसान पे after 14 overs SS Brothers are 93 for 5. Sanjeevan has finished his quota of 4 overs, none for 13. He has bowled brilliantly, not giving any room to the batters so settle down comfortably. And so his bowling analysis definitely supports the kind of bowling he has displayed today. That first ball from Murti B has been driven towards cover for a single. His first over in this match. Little bit short, so now he'll be continuing to bowl around the wicket to Manikandanji, and that will be a very very big wicket if they can get it because the partnership is now is moving along. It's not running around, but it's getting very very stronger with each runs being scored here. Murthy around the wicket. Manikandanji wanting to slash that ball, but will definitely get a single. These singles are not drying up. That must be a cause of concern here for the captain, because not only they're not being able to break this partnership, but the runs are also not drying out. Almost every ball has gone towards the deepest corner of this ground, even for a single. They have not seen a couple of runs for a long time, but the boundaries has also been dried up as the 50-run partnership have come up. 50 or 53, that ball has been drilled little over towards long on fence for a single from Sridhar, and will give a strike to the left-hander Manikandan this time, who's on 36 of 33. Both the batsmen have faced equal number of balls of 33 now, but the score is very healthy now. They are approaching the 100-run mark, just four shy of the team's 100. Again, gives himself some room. And there you can see the wagon wheel. If you can met out those wagon wheel of both the batters, it will definitely tell you of how squarish and down the ground they have played those strokes, which will literally imply that they've been using the open face of the bat very, very frequently, both versus the medium pacers and the spinners alike. So it's good. It's very good. So that will help them in good stead. Fifth ball of the 15th over, giving himself some room, wanting to use the long hander. The ball will. I'll not find the gap. At one point, I really thought that it found the gap towards the cow corner, but it'll be just one run. So all one on the board of the five balls that Murthy V has bowled in his first over. And now around the wicket for the last ball that he'll be bowling to the left-hander Manikandanji. He'll be chipping down the wicket. The wicketkeeper is behind. Otherwise, it would have been a stumping opportunity. He knew the wicketkeeper was standing wrong back, and that's why probably took the charge. 15 overs done and dusted. Just four extras in this name for SS Brothers. It's 98 for the loss of 5 wickets. That was the last one, that replay. And immediately, both of them were looking at the umpire.
believing it might just be a replay or something like that. To feel there was an age or something, we were looking at the replays of that squarish, so much of squarish that he had to reach out for the delivery because it was beyond from him. But Murthy has bowled a very, very good over. There are just couple of runs that is not sorry. So all the ones that have come in this over, only the last ball was a dot delivery. The 5 runs from his first. Now, as his brothers are shipping up to a respectable almost at around 140, 15 overs, 98 for 5. पी शिव कुमार के पास है गेंद। एक ओवर के बाद उन्होंने 4 रन दिए थे। सिर्फ 2 रन दूरी है 100 रन से और ये बॉल हुक करके मार दिया था, लेकिन वहां पे एक फील्डर है मौजूद मिड विकेट के क्षेत्र में। तो 99 पे है अभी 1 रन दूरी एसएस ब्रदर्स का 100 रन शेष। प्रोजेक्टेड स्कोर 131, काफी टाइम से 130 पर ये प्रोजेक्टेड स्कोर घूम रही है, तो ये जरूर चाहेंगे कि उसका आंकड़ा पार करके दबाव में डाले चैंपियंस 11 को। सही गेंद, बहुत ही सही गेंद, उछाल भी मिली थी इस गेंद से, लेकिन 1 रन जरूर चढ़ाएंगे और इस 1 रन के साथ 100 रन पूरे एसएस ब्रदर्स के। लेग बाय होगा जरूर, लेकिन 1 रन भी आएगा, इसका मतलब ट्रिपल फिगर्स में घुस चुके हैं एसएस ब्रदर्स। ये 15.2 बॉल्स मतलब 92 बॉल्स में 100 रन का आंकड़ा। हाँ, रूम दिया था, बहुत रूम दिया था, लेकिन बैट स्क्वेरिश होके जाएंगे काउ कॉर्नर की दिशा में, 1 रन मिलेगा। और अभी उनका हो गया 101 5 विकेट के नुकसान पे। शिवा कुमार बॉल करिए, ठीक इनसाइड एज, बॉल पीछे से जा रही है, क्या ये बाउंड्री की तरफ जाएगी? हाँ जी, कोई फील्डर मौजूद नहीं है। हाँ, ये रन्स चाहिए ठीक एंड फास्ट। अभी सिर्फ 5 ओवर से भी कम बाकी है, तो रन्स बतौरने में अब ये दोनों बहुत जल्दी निकल जाएंगे। तो ये अच्छी खबर नहीं होगा चैंपियंस 11 के लिए। देखिए कितना रूम बनाया था, कोई मौका नहीं था विकेट कीपर के लिए वहां पे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ऑफ साइड पे खड़े हुए थे। और जब भी ये इनसाइड एज लगती है ना, ये बहुत ज्यादा जल्दी ट्रेवल करती है, खासकर वहां पे जो ब्राउन एरियाज है वहां पे तो जाते ही और जल्दी क्विकन हो जाती है बॉल की स्पीड। 105 5 विकेट के नुकसान पे 2 गेंद और बाकी है 16 ओवर के। फिर से खोल के मारा इस शॉट को, ये स्टंप्स की तरफ मारे तो ओवर थ्रो मिलेंगे फिर से, लेकिन एक फील्डर वहां पे एक मौजूद है। अभी ये बहुत जरूरी होगा, कौन अपना कामनेस रखेंगे अंडर प्रेशर, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन हो जाता है अभी। ये देखिए उसका, अब मणिकंदन जी पहुंच चुके हैं 43, श्रीधर 29 पे। ये दोनों अभी हाथ खोलने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि स्लॉग ओवर चल रहा है अभी। अभी सिर्फ आपका 29 गेंद बाकी है यहाँ पे एसएस ब्रदर्स के इनिंग्स में। आखिरी गेंद 16 ओवर का। पी शिवा कुमार डाउन विकेट जाके फुल टॉस मारने के खेला है, वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है। अच्छा शॉट, अच्छा करारा स्ट्रोक दंदनाते हुए, और स्कोर पहुंच चुकी है 1-1-1, 5 विकेट के नुकसान पे 16 ओवर के बाद।
இல்லை இல்லை நீங்கள் ஆடும் போது இறங்கிடுச்சு சார். இப்படிதான் ஆடுறீங்க. लेकिन अच्छा शॉट था वो, और 117 पे पहुंच गए थे उस 6 के साथ भी। और अब एक विकेट भी चली जाएगी, मूर्ति वी को मिल गया है ये विकेट, और पहला विकेट उनके नाम पे, 1 for 11। और ये रिप्ले दिखिएगा, हाँ थोड़ा सा और बैकवर्डली लीजिए इसको, ये देखिए, आउटसाइड ऑफ सम लेने की कोशिश की थी, जस्ट बैट के टो एंड पे लगा, काफी ऊपर गई थी, बहुत ज्यादा ऊपर गई थी, और ये उनके सेफ हैंड्स में चली गई थी। अ, ये संजीवन है, संजीवन काफी अच्छी गेंदबाज भी है और काफी अच्छे फील्डर भी है, उन्होंने अपने आप को दर्शाया है। अब देखिए हडल में आई एम श्योर कुछ ना कुछ बातें कर रहे होंगे, लेकिन ये 5वां विकेट चला गया, इसका एक विकेट चली गई है, एंड श्रीधर वापस चले जाएंगे 35 बना के 39 गेंदों में, और एसएस ब्रदर्स 117 6 विकेट के नुकसान पे। सो चौथा विकेट गया है, और ये गेंद भी जाएगी विकेट के पीछे 4 रन होते हुए। हाँ काफी नाखुश होंगे, और क्यों नहीं, मूर्ति भी अभी अभी ही उनको एक विकेट मिला, विकेट के बाद ही ये नजारा देखने को किसी बॉलर्स को पसंद नहीं होगा कि पीछे चली गई है, सबको चकमा देके। और ये वाइड भी था, ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे लग के गई है, ये वाइड भी बन गया, तो 4 और वाइड, और स्कोर में हिस्सा होते हुए एसएस ब्रदर्स का 122 6 विकेट के नुकसान पे।
और इस वाइड और फोर के बाद ही फिर से एक एक रन अभी आएगा। अतिरिक्त शिव प्रकाशम आए हैं गेंद बल्लेबाजी करने के लिए मणिकंदन जी के साथ, जिनका बस 3 रन उनको जरूरत है। देखिए कितनी हवा ब्लो हो रही है बॉलर के पीछे। देखिए वो सरफेस जो कपड़ों से ढका हुआ है कितना ज्यादा लहराया है। अगर एक दो कुछ भी बूंदा बुनी यहाँ से गिर गई ना, वो तो उड़ के जाएगी, लेकिन आई एम श्योर वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह वहां पे जकड़ के रखा हुआ है। फ्यू ओवर्स पहले हमने देखा था कैसे गेंद जाके वहां पे फंस गई थी। 3 शेष अपने अर्धशतक से दूरी, मणिकंदन जी थोड़ा सा रूम बना के फ्लिक कर दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा पे। ये मिड ऑन की दिशा में ज्यादातर बोलूंगा मैं। और 1 रन जरूर मिलेगा। वो पहुंच जाएंगे 48 के निजी स्कोर पे, नाबाद रहेंगे 40 गेंदों में। और अभी है शिव प्रकाशम, जिन्होंने पहले ही गेंद पे जो उन्होंने फेस किया था वो ऑफ द मार्क हो चुके हैं। और स्कोर पहुंच गया एसएस ब्रदर्स के 124, 6 विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद 17 ओवर का, आउटसाइड ऑफ स्टंप, वो बॉलर गिर भी गए हैं और उठा के मारा था। अब फील्डिंग संजीवन की काफी अच्छी रही है, उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की है। अभी ये जो छठा विकेट गया था उन्हीं के हाथ में गेंद जाके गिरी थी और बेहतरीन कैच लिया था, ऊपर से मारने की कोशिश की थी। और फील्डिंग देखे उतनी ही बेहतरीन दौड़ के आए थे संजीवन। जर्सी नंबर 17 उन्होंने अच्छा वहां पे रोका। और 17 ओवर के बाद एस एस ब्रदर्स 126, 6 विकेट के नुकसान पे। P. Shivakumar has the ball in his hand. SS Brothers 126 for 6 on the leg side, tucked very well towards the man at fine leg. There is no one's very much squarish, so he will easily come back for the second and complete his half century. This is a very, very good half century from Manikandanji of 41 balls. This is a very, very well crafted half century. I don't know whether he is well aware of the fact or not, because he hasn't shown his bat to his colleagues. 4 fours and 2 sixes to punctuate his half century. Yeah, very, very well done, Panikandanji. He came with a very precarious position in the air, driven straight down the ground. But again, Sanjivan is the one who will field the ball. A couple of runs again to complete. This is very, very good running from Manikandanji, and Shiva Prakasam has also responded to those calls. So back-to-back couple of runs, and Manikandanji is looking as solid as ever with more than. So now they have 16 balls to complete this innings, and they will do a world lot of good if they can complete this innings, because at from one point they were looking down the barrel when they were 5 wickets down. But now, what a good healthy partnership that was when the fifth wicket fell. And now Manikandan G, after completion of his half century, will also look to be in a ferocious mood if he can, because he has capitalized and punctuated some beautiful strokes on almost every part of this ground. Now we can see at the non-striker, he's trying to just sit down, probably a pull of a muscle or something, because it's not easy. The conditions has been hot, it's been humid. There is a breeze blowing by, but sometimes it doesn't help the cause also, isn't it? So as his brothers, 131 for 6, 3 more balls remaining in the 18th over. As Siva Prakasham, he glides that ball towards a mid-wicket fence for 4 runs. At one point, I thought that he was gliding it towards fine leg, but it is more towards a deep mid-wicket fence with the ball going across his body. He plays this out. There you go. As the ball he came, he just helped the ball along towards the direction of mid-wicket, and 4 runs will be awarded to his name. So score moves from 135 for C. Again, fuller delivery, wanting to play on the same direction. The ball go all along the carpet. There is a fielder will take the ball, cut the ball off, throw the ball back to the wicket keeper,
and 1 run again added to the equation. One more ball remaining in the 18th over, and it will be Manikandanji, the left-hander, on 53 or 43, will be at strike and will facing Shiva Kumar. He still has a wicket to be taken in his name in his 3 overs to complete his spell. Manikandanji lofts the ball. The zone control doesn't control the ball. Is someone going to take the wicket? The camera is perplexed right on the pitch. That's why I cannot say much. But what I can see from this equation is that it's the end of the over. 18 overs done and dusted. And SS Brothers are 137 for 6. Yeah, healthy outside edge. The fielder is giving a chase. It is going towards the third man boundary. It has been chased. It has been stopped very much well in time. Otherwise, it would have toppled over the ropes for a boundary. It was an edge. What a good healthy edge that was, as it will bring Manikandanji back on strike as he moves on to 56 of 45. This was as a very, very well punctuated innings. Gives himself some room. The timing was really not there. It's a top edge. The fielder said, "Oh, he drops it. He drops a sitter." Mani Kandan G was a goner. And Rajesh will feel that our wicket has gone down begging from his quarter of wickets. It was long. It was not very high. It did settle for us some time, but he flounders that catch. And SS Brothers now 140 for 7. Shiva Prakasham on strike. Shiva Prakasham wanted to heave that ball, but it has gone back off the wicket keeper. What's happening in this over? This is a very, very dramatic over. Now they're in a very, very commanding position, I would say, SS Brothers, as the score is now almost shaping up towards 150. That's what I say about comebacks. Cricket is a game of glorious uncertainties, and this is one of those match where the match actually came on like a seesaw battle, and now SS Brothers are looking to be in a very, very nice position here versus Champions 11, who are yet to bat and yet to get a chase. Fourth ball of the 90th over, shapes himself up. What a nice pick of stroke that was from outside off stump, just like a walking stick in his hand. He flicks that ball towards the long on fence for a single and give the strike to Shiva Prakasam, who's on 8 of 5 and will face the fifth ball of the 19th over. 20 runs that Rajesh have given of his 2.4 overs. Look at this over 2-1, one leg wide and one. This time it might be an appeal. It's a huge, huge appeal. I exactly don't know for why. And they felt that there was a nick of the gloves, probably because he was giving himself some room from the off stump to play on the fine leg side. Last ball of the 19th over. Again, Pete that stroke this much square is on the offside. The stumps have been dislodged and the appeal has been raised and it has been accepted by the square leg umpire, meaning that it's the stump and Shiva Prakasam has to take the long walk back to the pavilion. 19 overs done, 7 wicket down. It's 142 for 7 for SS Brothers.
And oh, it should have been a catch, I believe. Should have been a catch, I thought, but the ball instead has gone towards the third man boundary for four. The runs are coming thick and fast here, especially from the bat of Mani Kandanji, and this is really, really not good news for Champions League. This is the winning catch. I believe he was squaring up with his eyes really there on the ball, but eventually that ball has gone towards the third man fence and just 4 runs away from SS Brothers. What will be a very good 150 on the board for them. Full toss, gets on the equation. He hooks the ball. It's in the air. There is no fielder. There is a fielder actually, but he will again do a fumble of duties there, and probably a no ball. That's what they are looking at the square leg to confirm. But he says it's all fair and square. So a couple of runs again, and Manikandanji will move on to 64 of 49, I believe, and the score on to 148 for 7 as Murthy V has the ball in his last over, chipping down the wicket this time, drives it very well. Did he find the fence? No, there is a fielder who will again fumble, and I'm sure they'll come back for the second one. No, they will just get 1 run. He is definitely now cramping. Look at the other hand, he's sitting down. He's losing a little bit of power of that, but he's playing for his team because it's a very, very important match. And Mani Kandanji, he is exposing a show of the highest order. He really, really needs to be patted on the back. Look at him at the other end. He's sitting down there and really needs some water down his belly because he can feel the cramps on his leg for sure. But he has played a magnificent innings of 65, not out of 50, as that ball has been curved away between point and gully fielder. Just 1 run for Balu, and the score will be now on to 150 for 7. An absolutely lovely comeback. This is from SS Brothers versus Champions 11. They have now done justice for what they have sent in to do, and now I'm sure Champions 11 will feel the pressure and the brunt of the heat that has been really been done here from SS Brothers. Full toss outside off stump, climbs onto that ball. This is in the air. Is there a fielder? There is a fielder, and he will take the catch. Finally, Mani Kandanji has to go back to the pavilion, but not before he has done the Jamagia, and Murthy B will pick up the second wicket to his name. The 8th wicket is down for SS Brothers at 150 for 8. Very much outside off stump. He climbed to that ball, and it was very much in the air. And he took that catch. Did he drop that catch? No, he's happy. He's very, very happy as the weekend is finally gone down for Mani Kandan and G. Yes, there he is. Yes, so go back to the pavilion, and I'm sure he will be supported with some rousing applause and some accolades because he has brought SS Brothers right into this game. And now with just one ball remaining in this last over of this first innings from Murthy V. But this has been a dramatic over. 4 runs, then two, then a couple of one, then a wicket of the big wicket, I would say, of Manikandan G. Not the best of the deliveries to get a wicket, but it doesn't matter because it came off the 5th ball of the last over. And now he knew better on strike. What can happen? He is Venkat. Gives himself some room, but misses the ball, and the ball hits the timber. Murthy V picks up the last wicket, and SS Brothers will finish after 20 overs on 150 for 9. And the target now for Champions 11 is 151 after 20 overs. You see the last wicket which fell, and there we go, shaping up to play that stroke. Look at the non-strike, always already halfway through, but he says, "Oh my lord, what have you done? You have just seen your timbers getting this." He's looking at the timbers. Oh, it does really disturb. Yes, they are. The front and the middle stump are back. 150 for 9 after 20 overs on the board for SS Brothers, meaning Champions 11 needs 151 runs in 20 overs. We'll be back with the chase after 10 to 15 minutes. So don't go away. Stay tuned and be right back with us on this YouTube channel of professional cricket competitions and universal cricket series. This is your host commentator Mayur Barwa, and I have always loved to bring every equation onto you as you can enjoy this first innings highlights. Bolde.
முரளி. சிக்ஸா? சரி. முரளி ஓ பார்டர் ஹே டேய் தப்பாடா இது. கச்சே சார் டெட் பால். catch it catch it. இங்கயா? बॉल कर लिए पीछे साइड एक बॉल पीछे से जा रही है आखिरी इन 16 ओवर का शिवा कुमार डाउन
Hello and a warm welcome to everyone. Back to the chase here. S's brothers scored 150 for 9 and Champions 11 now ready to face the first ball. It's going to be Sunrise A who's going to get the things moving with the first ball. And Avila says, "What's first ball? What is first ball for me? I can put this ball to any part of this equation of the ground any day of the here as the first ball has been deposited towards the cow corner for a mighty six to get the ball rolling for Champions 11. It's six for no loss in the very first ball. 8 for no loss. The first two balls has produced something very good and exciting for Champions 11. The third ball, very back of a length delivery, goes rightly there, defends it. But the first ball, he just walks in there. Avilas Damavarapu, as if it's like another day for him in the Champions 11. And that might be the replay of that six. Yes, yes, there you go. Right from the mid of the bat, from outside off stump, walks to the stroke. Yeah, surprise, I'm sure. Sharon Zenche defended very well off the front foot. This might be a very, very cheeky single and probably a at the fourth ball. Did he get a single? Yes, he got a single finally. It's already from this over. This is getting very, very interesting there. As Saran Raje now again will be mulling it to Avilash. I think sometimes when the batsman really packs you down at the very, very first over, it weighs very, very heavily on you because you're caught very much unaware. They require 150 of 20 overs. Now make it 151, 141. So it's 141 of 116 now. Two more balls remaining in Saran Rajova. On the leg side, wicket keeper almost got a glove onto it, but the ball will go towards the final leg boundary for 4 runs. It's a wide and it's a boundary. This over is actually costing them some runs for Champions 11 and not for a healthy cause of SS Brothers. He got some very good bounce there. There you can see some nice bounce. Probably it got off the hips, I believe, at for some point of time. But the umpire says it's yeah. There you go. It's a wide, a little bit of a swing also because the ball is relatively very very new. But 15 runs already from this over. Four balls, two more balls remaining. Wanting to hike it towards the deepest part of the ground. Didn't get any part of it, Avilash. Both the batsmen are Avilash and Avilash Damaraparu. At one point, I thought it's Damaraparu, but it's actually Avilash who took on the onslaught in the very first over and again wanted to repeat that stroke, but doesn't get any connection and onto the safe gloves of the wicket keeper.
Saranraj A now will have to get it done and does it very quickly with one ball remaining. He really needs to put it at a very nice spot of area where he can think of it. Otherwise, he might just make the onslaught look very sweeter onto himself. Last ball of the first over. Chipping down the wicket. This time he waits the fielder. Also, this will go towards the long on fence for another boundary. This over finishes with a boundary and 19 runs of the first over. Saran Raj A is distraughted with his hands on the hips. First over gone. And Champions 11 are 19 for no loss. Bola. Bowler coming right arm over. चैंपियंस 11 पहली ओवर में 19 रन बिना किसी नुकसान के 132 और रन की जरूरत है उनको अभी 114 गेंदों में बालू एंड दौड़ के आ रहे हैं डाउन द ग्राउंड ये मिड ऑन के दिशा में एक रन मिलेगा अविलास तमरा पारू को तो कंफ्यूज ना होएगा क्योंकि दोनों का बैट्समैन है अब एक का है वविलास एक का है अभिलाष अभिलाष जिनका एज नहीं है नाम पे वो है 13 नॉट आउट 5 गेंदों में और क्या पारी खेली अभी क्या ना यार शुरुआती यार पारी खेली है हाँ वो एंड हेलो दोनों मो को मिला के ए 15 आ रन गया हुए बाल बोल आप सोचेंगे 5 रन कहाँ से है एक वाइड और 4 भी हो गई थी कोई अगर हमारे टेलीकास्ट को लेट से बाले पैसे ज्वाइन किया रहा उन्होंने बाल लिया था उन्होंने पहला ओवर जरूर मिस किया कि 19 रन आए थे उस ओवर से पहले ही गेंद पे 6 रन क्या विस्फोटक शुरुआत है ये चैंपियंस 11 का बलुएन ए बाल ना अरे अभी बड़ा बालुएन बाल आए तेरी ना बालुओं को फेंक ओके के शाम मारा की है तरीके अभी क्या लाश ने नहीं क्या कहीं बॉल जाके गई बोल है क्या ये गई है ये वृक्ष के बीचों बीच जाइए कोई गेंद ढूंढ के लाइए जरा ये अपने दोनों हाथ को दिखाते जा रहे हैं अंपायर क्योंकि उनको लगता है ये छक्का नहीं है डबल छक्का होना चाहिए हाँ जी हाँ ये देखिए ओ गुडनेस ओ माय एब्सोल्यूट गुडनेस ऑफ स्टंप से लेके उनको उठा के मारा है कहीं जाके गिरी है गेंद फिर से वो पहाड़ का नजारा फिर से शोले की याद आ गई मुझे लेकिन ये जो शोला ये जो आग उन्होंने उगलाया है इस ओवर में ये दर्शाते हैं कि ये मैच उनके लिए कितना महत्वपूर्ण कितना मायने रखता है ये वर्चुअल नॉकआउट है माइंड यू इसलिए चैंपियंस 11 एक चैंपियन टीम की तरह खेलना चाहेंगे और अपने नाम पे खरे उतरने की कोशिश जरूर करेंगे 26 रन 8 गेंदों में आ चुके हैं अभी तक और बालूएन बहुत प्रेशर में 7 रन ऑलरेडी आ चुके हैं उनके 2 गेंदों में और अभिलाष 19 नाबाद 6 गेंदों में फिर से बालूएन दौड़ के आ रहा है अभिलाष को और उठा के मारा है ये गेंद कहां जा रही है सीधा लॉन्ग ऑफ के तरफ 6 रन दोनों हाथ ऊपर आ गई है अंपायर की अभिलाष आप मत बनाए और भी लाश लेकिन लोग हो जाएंगे निराश यहाँ पे निराश करने के लिए आए अभिलाष ओ माय गुडनेस क्या शुरुआत है ये विस्फोटक शुरुआत है और एसएस ब्रदर्स के लिए ये खबर अच्छी नहीं है क्योंकि गेंद ये मारते जा रहे खोल खोल के मारे इनको कोई डर नहीं है इनमें अभिलाष हाँ ये थोड़ा सा शांत 13 रन आ चुके हैं गेंद ढूंढने की कोशिश में है 1.3 गेंदों के बाद चैंपियंस 11 32 बिना किसी नुकसान के
நியூ பாலே வா போடா நியூ பால்லாம் வச்சுருவோம். வெங்கட்டா நியூ பால் சொல்லிட்டா அந்த பையன் லெஃப்ட் ஆஃப் ஸ்பின்னரா. One 0.3 overs के बाद चैंपियंस 11 32 कहूंगा अभी बिना किसी नुकसान के क्या शुरुआत है। और ये सेकंड ओवर भी बिल्कुल ही एक ही जगह गई थी। 2 गेंदों पे 2 छक्का और 1661। अभी बालूएन फिर से आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए अभिलाष डामरा पारू को, जो 2 नाबाद है 2 गेंदों में। उन्होंने दूसरे छोर से काफी कुछ देख लिया क्योंकि उनका जो ऑलमोस्ट सेम नाम अभिलाष ने 24 मारे 8 गेंदों में फ्लिक कर दिया अभी अपने हिप से 1 रन के लिए। और अभिलाष को देंगे अभी इसको स्ट्राइक। பால் யார் எத்துன்னு தெரியலையா, இவ்வளோ பெருசாகுதுடா. டேய் அங்கே தம்மா தூண்டி எப்படி ஆச்சாலும் போயிடும். अभी आखिरी गेंद दूसरे ओवर का। बालू दौड़ के आ रहा है अभिलाष को, शॉर्ट डिलीवरी बैकफुट पे जाके हॉइक कर दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में। फील्डर चेस कर रहे हैं, अपने पैर से रोकने में कामयाब होंगे लेकिन 2 रन जरूर दौड़ के मिलेगा अभिलाष को। और ये ओवर हो गया खत्म। 2 ओवर्स के बाद चैंपियंस 11 32 बिना किसी नुकसान के। டேய் நீ நேராக ஸ்டெம்புக்கு போட, நீ இது போடிய போன மேட்சா ஸ்டெம்புக்கு போட்டு நேராக பேட்டில் போட்டுறாரு. So after 2 overs, Champions 11 are 35 for no loss, needing 116 more runs to win. Manikandanji with the ball in his hand, wanting to swing was Avilash in the very, very first ball. Every ball that he's facing is now trying to clean the ball of the hand of the bowlers. Manikandanji, he also played a brilliant knock of 65 plus today, but he's a left-handed batsman. But when he has the ball in his hand, he is a right-hand batter. He's almost like Saurav Ganguly. Saurav Ganguly bats left-handed but bowls right-handed. So probably he might have Saurav Ganguly as an inspiration. Never know. Manikandanji again running into ball to second ball to Avilash. Avilash shapes onto him again to play the high stroke towards mid wicket. I'm sure Avilash Tamaraparu won't say anything to him because he has just faced 3 deliveries onto him on the same number 3. He would definitely say Avilash to play his own natural game, which is just to take the ballers to the cleaners. It's 27 27 नाबाद है 11 गेंदों में, and I'm sure he won't try and take a second fiddle onto him. Third ball of the third over from Manikandanji to Avilash. This time very, very softly played. This is very, very unusual game of cricket that Avilash has played this time. He wants to rotate the single, and so he'll give the strike to Avilash Tamaraparu, and he'll get a single to his name as he moves on to 28 of 12 and score at a very, very high rate. The current run rate is 14.40 as against the need at 8 runs per over. So they need now 115 or 105. They are going at a very, very healthy and a thick run rate now. And I'm sure they'll be very happy and very, very pleased, especially Avilash, because he has given a perfect rolling start for Champions 11 this time outside off stump, very softly with front foot, and he will open the face of the bat towards the man at point.
will get a single, rotate the strike and give it to Avilash. And now he will be facing Mani Kandanji again. He have been trying to play the long shots of Mani Kandanji. Spend initial two balls. And I'm sure Manikandanji will be having this in the back of the minds. So the length and the line has to be immaculate when he bowls to Avilash. Avilash shapes and he hoiks it towards the fence பேட்ல across போடாடா long என்ன on. The fielder cannot cut it off. The ball went off like a bullet when it பவுண்டரி went. பவுண்டரி And this has been put to perfection for Avilash. He moves on to 32 of 30 in the score on to 41 for no அப்படியே loss. அந்த பக்கம் எடுத்துக்கடான்னு This is really சனி tough, பிடிச்ச tough news here, கட்டு tough proportion here for the bowlers of SS தோகு தாத்தா Brothers. சிக்ஸ் When a வந்துட்டே இருக்குது batsman is in such a destructive mood, it becomes very tough to contain him. It's a really feel pity and sorry for the bowlers at this moment. And it's so early in the innings. Not even 3 overs have been completed. Just one more ball to go in this over. And Manikandanji will be praying that he becomes little piece. On the leg side, wanted to play it on the fine leg. The appeal was from the wicket keeper, but Manikandanji knows that it has gone on the leg side. So 3 overs done and dusted, and Champions 11 are 41 for no loss. At a run rate of 13.67, Champions 11 are going very, அட very. போட I'll say they are cruising along to this target of 151 being set by SS Brothers. They are not looking at in any sort of discomfort. Champions 11. That's the kind of impetus. That's the kind of disdain kind of strokes that Champions 11 have imparted on SS Brothers. So it's becoming very, very tough now. And Baluen has the ball in his hand. 16 runs he has given, and of 1.1 overs. He's running into bowl to Avilas Namaroparu on the leg side. He will tuck it away, and that fielder at a short mid wicket cannot cut it off, as he'll get a single and give it to Avilash again, who's batting on 32 of just 14 deliveries. There is the equation 109 of பால் exactly பால் 100 குத்தி balls போடணும் at a current run rate of அதை மட்டும் 12.6 and எடுத்துக்கணும் required run rate of 6.54. They're going at almost double the runs that they need. 109 of 100 balls. So it looks like the new format which has been introduced in England, the 100. It recently just got over the 100. It's one of the most well marketed sport in England, cricket with the 100. Smashed it away all over the top. This has gone to the boundary like a treasure bullet. Not even a single fielder moved while that ball traveled all over that cover. Oh my God! Even the cameraman, I'm sure, found it difficult to trace that ball. ஏய் This was அவர் பேட்ல it போட was அடிச்சிடாரு it was hit at a very rollicking speed from Avilash Tamarapadu this time on strike. They are trying to finish this match at a stroke of knots now, which is really not good news for SS Brothers. I'm sorry, that's not Damaraparu. It's Avilash now on 36 of 15. He's hitting every bowlers almost all corners of the ground, and is not throwing any stones unturned for any of the strokes. Again, on to 46. What is 46? I want to பாத்தியா make this equation குத்தி different. போடா நீ But குத்தி one போடா கன்ஃபார்ம் run, விக்கெட் it will கிடைக்கும் be from the cow corner as கொஞ்சம் they ஆனா exchange போச்சு numbers இந்த with படம் தான் Avilas அடிக்கிறது வீட்டுக்கு Namarapadu, வெளியே who's on 5, not out of 6 now. Look at the வா வா இங்க வா splits, that split screen. Ah, my God. Oh, my God. Look at the other screen. Look at that other screen.
He just curved that stroke into oblivion. That was really nastily hit, I would say. I'm sure that ball must have got slapped like anything. But that side of Damaraparu, Avilash, it's a serene sight at the moment because he hasn't done anything very unorthodox. But this time he says, "I will try and do something, take a leaf out of the book of my partner Avilash." As that ball has crossed across the boundary towards the fine leg for 4 runs, and the 50 is up for the champions 11. 51 is of 23 balls is the partnership, out of which 37 has come off the bat of Avilash alone. This is a magnificent opening partnership here for Champions 11. They are not doing anything wrong at the moment, and SS Brothers still in hunt for the first wicket. Are looking out of sorts here and still having no answers, no questions unanswered here. And that ball from Avilas Damaraparu has been driven towards cover. Forbes on is on 9 not out of 7, and what a good start this is for Champions 11. They are 51 without the loss of any wicket after 4 overs. तो 4 ओवर के बाद चैंपियंस 11 51 बिना किसी नुकसान के मणिकंदन जी के हाथ में है गेंद। 1 ओवर के बाद उन्होंने दे दिया 6 रन। अभी अविलास स्ट्राइक पे और पहली बॉल आउटसाइड एज, देखिए कहाँ जाके मारना चाहते थे। 37 नॉट आउट है अभी 17 गेंदों में इस बॉल के बाद। करंट रन रेट 12.70 और रिकॉर्ड रन रेट 6.25। ये लोग अभी ये देखिए नीचे सोच पहली बार टॉस जीत के एसएस ब्रदर्स ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। 150 मारे थे अभी अविलास, अभी 2 बॉल पे 2 ऑलमोस्ट सिमिलर, दोनों गेंद सिमिलर बॉल पे है और फिर से वो अपील कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्रॉस बैट खेल रहे हैं, बिल्कुल क्रॉस बैट खेल रहे हैं यहाँ पे अविलाश। लेकिन पिछले ओवर में उतना सुंदर कवर ड्राइव मारा था उन्होंने जो बिल्कुल चली गई थी बाउंड्री रोप के बाहर, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों गेंदों में वो क्रॉस बैट खेल रहे हैं। हाँ, ये अपील इसलिए तो बन रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि वो टूवर्ड्स एक्चुअली वो स्टंप जो थर्ड स्टंप है वहां पे शायद लगती। हाँ, उठा के मारा है, उठा के मारा है, कहाँ जाके गेंद गिरी है। ओह माय गुडनेस, ये गेंद को लाना पड़ेगा, आई थिंक इस गेंद को बदलनी पड़ेगी, काफी मार पड़ी है, इस बार गई है बिल्कुल डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, ये बॉल तो ढूंढनी पड़ेगी भाई साहब। ये 57 बिना किसी नुकसान के। अविलाश अविलाश ये क्या शो आप दिखा रहे हो यहाँ पे। एसएस ब्रदर्स आई एम श्योर वो अंदर से बिल्कुल हिल चुके हैं। ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था ये रणनीति ऐसी होगी अविलाश की। 19 गेंदों में 43 नॉट आउट और दमरा पारू, अविलाश दमरा पारू। आप देखिए यहाँ देखिए क्या उठाते हैं, क्या उठाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल शाहिद अफरीदी की याद आ रही है मुझे, राइट हैंडर शाहिद अफरीदी, एंड ही इज a household name not only in Pakistan but all across the world। ये भी ऐसे वन लेग उठा के बस जगह जगह खड़े खड़े सिक्सेस मारते थे। तो सही में अविलाश आपने मुझे उनकी याद दिला दी, शाहिद अफरीदी की। एंड 57 बिना किसी नुकसान के मणिकंदन जी फिर से दौड़ के आ रहे हैं उनकी तरफ और लेग साइड पे मार दिया है, विकेट कीपर नहीं पकड़ पाएंगे और गति की रफ्तार के साथ वो फाइनल की दिशा में फिर से चली जा रही है। 4 रन लेग बाय इस बार इशारा, तो अभिलाष के पैड का स्ट्रैप खुल गया है, इसका मतलब हाँ जी पैर से ही चली गई, लेकिन रन्स का बहुत चार यहाँ पे रुक ही नहीं रहा है। चैंपियंस 11 61 बिना किसी नुकसान के विकेट कीपर के दस्तानों के बीच से निकल गई विकेट। अब
वो बॉलर मणिकंदन जी अपील कर रहे थे, ये सारा कुछ हो रहा है, अपील कर रहे हैं, विकेट कीपर निराश हो रहे हैं, बॉल பவர் பிளே बिल्कुल पीछे முடிஞ்சிச்சுன்னா से बोला ஈஸியாக போகலாம்டா टाटा बाय बाय, சித்திர आप लोग இருடா. डिसाइड करो बीच में जी, मुझे तो अपना काम करना है, मुझे நான் जो போகிறேன் கொல்ல डायरेक्शन दिया गया है मैं वहीं போயிட்டு पे இருப்ப चले கொடு. जाऊंगा। तो लेग बाय का इशारा 61 बिना किसी नुकसान के, अभी इक्वेशन है 90, 92 बॉल्स में, बिल्कुल ड्राइविंग सीट में है अभी चैंपियंस 11। एंड वो बोलते हैं ना, दे आर शोइंग व्हाट चैंपियंस कैन डू, चैंपियन நான் इसलिए பால் तो है சைடில் चैंपियंस பால் போகிறேன். 11। अब तो ये अभिलाष बिल्कुल 3 रन दूरी है अपने अर्धशतक से। ये बेहतरीन, एब्सोल्युटली बेहतरीन बारी खेली है उन्होंने, सीधा இப்போ जाके मारा है, बॉल गई போட்டு है இப்போ பால் போடா. सीधा, बिल्कुल सीधा जी, और वो बिल्कुल जमीन पे लेट भी गए हैं, क्रैम्प हो चुका है शायद, और अपना 8 दशक भी कंप्लीट कर चुका है, யோகேஷ் 53 21 गेंदों में, देखिए बिल्कुल बिल्कुल सीधा लेट गए हैं ग्राउंड पे। ओह माय गुडनेस, ये जो आपने आज जो प्रदर्शन किया है, हाँ जी, अभी अविलास பாலை ஸ்டெம்புக்கு पारू பவுன் गए हैं उनको போடலடா. थोड़ा सा मदद करने के लिए, और 84 चाहिए 91 गेंदों में, एक बॉल शेष 5 ओवर में, चैंपियंस 11 और 67 बिना किसी नुकसान के। वो शॉट देखिए, वो शॉट देखिए, वो ऐसा लग रहा है कि ये मूवमेंट फ्रीज हो चुकी है, मूवमेंट ऐसा लग रहा है फ्रीज बिल्कुल, लेकिन जब वो बॉल जाके खत्म हुई ना, फिर और लेट गए बॉलर में, इससे ज्यादा और शायद नहीं पुल कर पाऊंगा, लेकिन ये गेम वो आपके लिए खेलनी पड़ेगी, ये आपको मैच खेलनी पड़ेगी, क्योंकि इट्स लाइक ए वर्चुअल नॉकआउट है ये। ये देखिए खुल के एक हाथ से वहां पे वहां पे लगी, उनको बहुत ज्यादा था इस पे, क्योंकि जो जोड़ है ना, बिल्कुल वहां से निकल गई, बहुत गर्मी का दिन है आज, इट्स हॉट, इट्स ह्यूमिड, आई बीन सेइंग, एंड इट्स रियली रियली नॉट इजी टू प्ले सच काइंड ऑफ स्ट्रोक्स, लेकिन उन्होंने कर दिखाया अभी। एक गेंद बाकी अभी 5वें ओवर, मणिकंदन जी अभिलाष अभी फिर से बाहर से स्लाइस करने की कोशिश, अभी ஆ भी उनको वहां पे இவ்வளோ பெரிய பால் थोड़ा सा वो நீ फील போடு कर रहे போட்டுனா हैं। எப்படின்னா போட पांच முடியாதுடா. ओवर हो गया है खत्म, चैंपियंस 11 67 बिना किसी नुकसान के। சூப்பர் சூப்பர். ஏய் இவ்வளோ பெரிய பால்டா.
এটা ওর ব্যাটসম্যান। 5 ओवर के बाद 67 बिना किसी नुकसान के। चैंपियंस 11 की गतिविधि अभी देखिए कितना जोर जोर से चल रही है यहाँ पे। वेंकट आए हैं गेंद के साथ, वेंकट कृष्णनाथ, और बॉलिंग करे आम विलास दमरा पारू को। और वो अपनी गति में थोड़ा स्लो है, ये बहुत जोर जोर से उठा के नहीं मारते, थोड़ा सेंसिबिलिटी दिखाते हैं। सिर्फ एक गेंद उन्होंने जो फ्लिक किया हुआ था और वो फाइनल की दिशा में चली गई थी 4 रन के लिए। तो अभी 10 गेंदों में 9, लेकिन अभिलाष को देखिए नॉन स्ट्राइक 22 गेंदों में 53 नॉट आउट। स्लो डिलीवरी, इसको उठा के मारने की कोशिश की थी, स्लाइस हो गए थे आउटसाइड एज की तरह, बैट की बाहरी किनारा लगा, गली की दिशा में चली गई थी, लेकिन कोई रन नहीं। सो हैट्रिक ऑफ डॉट बॉल्स यहाँ पे। वो अभी भी 9 रन पे नॉट आउट है 11 गेंदों में। யுவராஜ் இங்க போனா மயில் அங்கே ஓடுறா. यहाँ पे थोड़ा सा रन रेटिंग बदलने की कोशिश करें, एक स्लीप अगर वो रख दे, एक डीप गली तो है ही, लेकिन अगर एक स्लीप रख सकते हैं ना तो उनको दबाव भी जरूर दिला सकते हैं वेंकट। उनकी चौथी गेंद 7वां ओवर का, बहुत हल्के हाथों से खेला उसको, ये चली जाएगी अभी पॉइंट की दिशा में, कोई रन नहीं मिलेगा फिर से। और ये देखिए ये मैच के बाउंड्रीज 18 बाउंड्रीज, 10 सिक्सेस आए हैं और करंट रन रेट अभी भी बहुत हैवी, उनको 84 चाहिए 86 गेंदों में। वेंकट दौड़ के आ रहे, 5वीं गेंद स्लॉट डिलीवरी, इसको उठा के मारा है और फील्डर के भी ऊपर से चली जाएगी 4 रन के लिए लॉन्ग ऑफ के दिशा में। हाँ, एक टाइम पे लगा था कि वो जरूर उसको रोक पाएंगे या तो पकड़ पाएंगे, लेकिन ये 4 रन के लिए चली गए। इस बार ये तमरप्पारू के बैट से स्लोअर डिलीवरी थी, उसको जानबूझ के डेलिबरेटली वहां पे उठाया। லாஸ்ட் பால் ஆஃப் த थोड़ा सा பவர் பிளே. शायद उंगली का डिफ्लेक्शन हो चुका होगा वहां पे, थोड़ा सा लग के, लेकिन लेकिन गेंद में गतिविधि थी, उसमें उसमें एक जोर था, एक लालच था, इसलिए वो चली गई बाउंड्री रेखा के बाहर। 71 बिना किसी नुकसान के। फिर से स्लो डिलीवरी बिल्कुल ஒரு फ्रंट फुट पे आके பவர் பிளே उसको वाटर कंप्लीटेड. टाइट जैसे कर दिया है डिफेंस, और 6 ओवर हो गया है खत्म। चैंपियंस 11 71 बिना किसी नुकसान के। So after 6 overs, Champions 11 are 71 for no loss. As Rakesh RSCA has the ball in his hand and he'll do the spinning duties here for SS Brothers. 80 more required of 84 left arm spinner. And he's bowling to Avilash. And first ball, Avilash, unusual of his gameplay, has just slowly played it back to the bowler. He runs 53 or 23, I'm sure, as he sees that spinner running up the strike. He must be licking his lips.
and which might not be good news for the spinner. But if he can ball a good line and length, then I'm sure he can constrain the flow of runs. Doesn't fly the ball too much again. Wanted to slash it, but take inside edge of his bat. The ball will go towards very slowly towards the long on direction for just one run, and Avilash will exchange numbers with Avilash Varapu, and who's on 13 on double figures of 14 balls. Rakesh RSCA off the back foot, giving himself some room. Very quick single will be stolen here. A little bit of a misfield that will not allow them to come for the second. Just one run. And Champions 11 are now on 73 for no loss, needing 78 more runs of 81 balls. He is cramping. He is definitely badly cramping now, Vilas. He's lying flat on the ground. He is needing assistance. He will be needing assistance. He cannot move an inch. I don't believe so. If he plays another stroke, I'm sure he'll be gone out of fuse here. This is really not the side that the team Champions 11 might be hoping to look after, because he has hit some scintillating strokes, and in order of doing so, I believe, I'm sure the fielding side will be happy a lot, because to see him go back to the pavilion and sit there and watch the rest of the innings, because the kind of strokes that he's made today onto himself. They probably joking on to that bowler, saying that this is the side you want to see, and you'll be really hoping in your mind that he goes back to the pavilion, either not out or out, whatever it is, and let someone சார் சார் else இத்தனை come பேர் in வேணாம் சார் and join Avilas Tamaraparu. தனி But whatever it is at the moment, it's little ஆமாம் halt of play, because all are attending. Are ever cramping Avilas. The score for Champions 11 is 73 for no loss in 6.3 overs. சார் மைக் டெஸ்ட் நான் குடிக்க அப்படியே ஊற்றுங்க.
7 ओवर के बाद चैंपियंस 11 74 बिना किसी नुकसान के थोड़ा सा क्रैम्प्ड हो चुके थे अभिलाष। 55 की अपनी निजी स्कोर पे नाबाद 26 गेंदों में, और दूसरी शोर पे अभिलाष दमा दमावरा पारू 14 नॉट आउट है 16 गेंदों में। काफी अच्छी रन रेट थी, और ये चेज का आगाज किया है उन्होंने यहाँ पे 7 ओवर पे, और टारगेट 151 20 ओवर में, तो शुरुआत काफी अच्छी होनी चाहिए थी और हो भी गई है। वेंकट यहाँ देखिए बॉल खड़े बॉल खड़े बॉल। खेल रहे हैं, ये उनके लिए थोड़ा सा अच्छी बात हो सकती है फॉर एसएस ब्रदर्स, क्योंकि अभी थोड़ा सा उनमें जो ताकत है, जो जोर है, थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि क्रैम्प है। लेकिन दूसरी ओर पे ये भी है कि वो अभी खड़े खड़े अपने शॉट्स खेल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दर्शाया भी है कि खड़े खड़े वो बहुत लंबे छक्के मार सकते हैं। अभी देखिए फिर से डाउन द लेग साइड जाने की कोशिश की थी, विकेट कीपर उसको रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गतिविधि और वेलोसिटी थे ही नहीं गेंद पे, तो ये लेग बाय का इशारा, और सिर्फ एक रन अभी मिलेगा। तो ये अभी नॉन स्ट्राइकर पे आ चुके हैं, थोड़ा सा राहत की सांस मिलेगी अभी बॉलर्स को। और देखिए कितना उनका कद, देखिए काफी लंबे क्रिकेटर हैं ये अभिलाष, वर्सेस उनके जो स्ट्राइकर अविलास दमापरभु है, उनसे कद में काफी ऊंचे हैं। अभी ये स्लो डिलीवरी आउटसाइड ऑफ स्टंप था, ड्राइव करने की कोशिश की थी लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए, और विकेट कीपर के सिर्फ दस्तानों में उन्होंने फ्लैश करके उनके पेल्स को हटा दिया था। उनको अभी विकेट चाहिए, दोनों अविलाश में से कोई भी दिला दीजिए अभी, लेकिन ये एक पार्टनरशिप तोड़ी, अगर अविलाश का विकेट मिल गया तब तो सोने पे सुहागा, लेकिन अविलाश डमरप्पा का भी अगर विकेट मिल गया तब भी अच्छी बात है कि एटलीस्ट ये विकेट, एक विकेट तो आएगी, क्योंकि एक भी विकेट नहीं आया अभी तक उनके खाते में, तो ये कप्तान के लिए बहुत ही सोचने लायक अभी चीज है। हाँ, थोड़ा सा रूम देगी खेलने की कोशिश की थी, ड्राइव काफी अच्छी थी, बहुत सुंदर था, लेकिन ये गैप नहीं ढूंढ पाएंगे, कवर्स की दिशा में खेला अभी, डॉट डिलीवरी, और सिर्फ एक लेग बाय आया है वेंकट के इस ओवर में, पांचवा गेंद दौड़ने के लिए, और शिपिंग डाउन द विकेट जाए हैं, और कवर्स को बिल्कुल खारिज करते हुए वहां पे गाय जा रही थी, गाय ने बोला नहीं जी नहीं, मुझे जाना है, ये गेंद तो बहुत गर्म होगा, क्योंकि अगर ये लगी ना मुझे तो चोट लगने वाली है। लेकिन बहुत अच्छा प्लेसमेंट था ये अविलास दमरपारू के साथ, और डाउन द ग्राउंड गए थोड़ा सा एक दो, ये देखिए आके उन्होंने अच्छा सा प्लेसमेंट किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 4 रन मिल गए उनको, और स्कोर पहुंच गया 79। आखिरी गेंद, ये अपील हो सकती थी, काफी बड़ी अपील, और अभी दोनों दोनों विकेट कीपर और गेंदबाज जानना डबल सेंचुरी। चाहेंगे कि आउट नॉट आउट, इसलिए वो आप स्टेज जाना चाहेंगे। अभी फिलहाल 8 ओवर के बाद ये 79 बिना किसी नुकसान के हैं, लेकिन ये शायद अपस्टेज भी चली गई है, तो अभी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होगा। 79 फॉर 1 भी हो सकता है 8 ओवर के बाद, लेकिन अभी फिलहाल 8 ओवर के बाद 79 बिना किसी नुकसान के चैंपियंस 11। लेकिन अगर उनको ये विकेट मिल गया तो शायद அஞ்சே ये தானே இருக்காங்க. कमेंटेटर्स कर्स ஏய் हो भी ஆள் सकता இல்லாத है, மாதிரி क्योंकि இருக்கு. बिकॉज मैं बोल रहा था कि एक विकेट आना उनके लिए जरूरी है। अब ये रही गेंद जिसमें वो लोग अपील किया था, बहुत सीधी लाइन पे आई थी, लेकिन इनका एंगल देखिए, ये देखिए फ्लिक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंपायर को लगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लाइन के बहुत कोने से आता है, तो उनको लगा ये शायद स्लाइड होके जाएगी डाउन द लेग साइड। लेकिन अभी अगर थोड़ा सा, हाँ ये जूम अप, ये अच्छा है, ये हमें जरूर दर्शाएगा कि यहाँ पे अभी इनकी क्या होगा, उनका अभी ये रहेंगे नॉट आउट होंगे। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा क्लोज जरूर लग रहा है, लेकिन हमें फिर उनका एंगल भी देखना पड़ेगा। ये मिडिल, बिल्कुल मिडिल पे पिच होके, ये देखिए थोड़ा सा फ्लिक करने की कोशिश की थी, वो बिल्कुल चुक गया उनको, और गेंद जाके बिल्कुल मिडिल ऑफ द मिडिल पैड, मिडिल ऑफ द पैड पे लगी है। और अभी ये जो उसका रिजल्ट है वो शायद जल्दी आ जाएंगे यहाँ पे अभी, और ये सिग्नल है नॉट आउट, खारिज कर दिया, खारिज कर दिया। तो ये आपका, क्योंकि ये नॉट आउट था तो ये नॉट आउट ही रहेगा, और अभिलाष दमरा प्रभु
अभी नॉट आउट रहेंगे, तो अभी स्ट्राइक पे आ गया अभिलाष की भी ओवर भी हो गया था खत्म 8 ओवर के बाद। चैंपियंस 11 79 बिना किसी नुकसान के। After 8 overs, champions 11 are doing what champions do the best: remain not out and climb onto those bowlers. 79 for Nolos onto the Avilas. Avilas goes down the ground. Has he connected well? He has connected it very well, all across the fence towards the long off boundary for a handsome 6 runs to his name. Score moves on to 85, and he moves on to 61 of just 29 deliveries. Just stood up there and given that ball the elevation and the distance to clear the room for himself. There you go. A little bit of that leg. That leg also comes up because he knows the pain is still there, but the pain will become very, very nice and sweet if he can put his team into those victory quarters. The next ball, short delivery, smashes it through the covers, and the fielder cannot dive to it. The other fielder also cannot put his footing right on time. It has gone towards the covers of 4 runs. This is a classic hitting of the highest order. It also reminds me of Glenn Maxwell's double hundred in the World Cup versus Afghanistan. Australia were 97 for 7, and then with a double hundred with one leg up, he was cramping. Mind you, Glenn Maxwell was cramping, and with that, in Bangalore at the Chinnaswamy Stadium in Bangalore, he crafted a double hundred in one day international. It was one of the best one day knocks that I've seen in my life. He goes down the ground. While that shot, where is that shot that will pluck the leaves of the trees and come down to the earth? Oh my goodness me, geez, these are some great looking cricket shots that's coming off the bat of Avilash, and SS brothers are still in search of that solitary wicket on. This is not a pretty sight. This is an absolutely not a pretty sight for SS brothers, as Avilash are taking them to the cleaners, and there he's taking them to the cleaners across almost every part of this cricket ground here in Vellore, cricket ground here in Vellore. 16 runs already of this over with 3 more balls remaining. Rakis Aresi again onto Avila, spins the ball again. He goes down the ground where he has deposited ball. Where he has deposited. It has gone. Whether it's a 6, it's a 4. It's a 6 or a 4. I'll have to wait. What it is? Yeah, up goes both the arms. Up goes both the arms. It's double sixes in 2 balls. Avilas is crafting an each for himself, and 100 is up for the team. And of course, the partnership is 101 of 52. Rakesh RSC is brewing trouble for himself. Again, short delivery this time inside edge of the bat. Is it going towards the fine leg? There is no one actually. There is a fielder who will come and charging, running in for himself. I'm getting short of words. I'm getting short of breath because Avilas is not allowing anything and anyone to settle here. He has moved on to 78 of 33. Last ball to Avilas Damara Paru, and he chips down the wicket. He also climbs onto the ball, but the trajectory and the path of the ball will be blocked by the fielder at Gully. 9 overs bowled, and Champions 11 are just galloping around at 102 for no loss, chasing a target of 151 versus SS Brothers.
Good shot down the leg side towards the fine leg boundary for 4 runs. This is good hitting again from Vilas. He moves on to 82 of 35, and the score will move on to 106 for no loss with that stroke. Every stroke that has come of the blade of Vilas has gone almost towards the boundary. I would say around 85 to 90% of the strokes that he has hit has gone towards the boundary. Very, very minimal of the strokes have been converted into singles and doubles. That's the kind of day that Davilas is having, and making the ladder hunt for the bowlers and the fielders of SS brothers. And I really don't know whether it's brothers in arms or not, because when you feel it's brother, he's not making any brotherhood here. It's 106 for no loss. Venkat again onto Avilash. Again, he wanted to play almost in a similar fashion, but the ball has hit his inside thick part of his ties, and it will go across the wicket keeper. No runs being scored. The score remains at 106 for no loss. And here Vilash on 82 of 36. Venkat again running on to him. Chips in the air. It's very much in the air. This time the equation might be favoring SS Brothers. Settles and takes the catch. He tumbles on the ground but keeps full control of that ball in his hand. So the first wicket is down, and most importantly for SS Brothers, it's a huge wicket of Avilas, who is going back to the pavilion after scoring 82 of 37. And the first wicket is down for Champions 11. It's 106 for 1. एक सौ छह एक विकेट के नुकसान पे अभिलाष चले गए हैं पेविलियन के वापस, एंड संजीवन आ गए हैं अभी खेलने के लिए. बहुत ही बेहतरीन लेफ्ट हैंडर है संजीवन. आपकी टीम के लिए ये एक नया जीवन दे सकते हैं. संजीवन बहुत ही खास नाम है उनका. आखिरी गेंद 10वीं ओवर का आउटसाइड ऑफ स्टंप, लेकिन ये वाइड करार दिया जाएगा. थोड़ा सा ये शॉक्ड होंगे कि ये वाइड क्यों दिया गया, क्योंकि ये संजीवन को ये बहुत ऊपर जाके उसको खेलने की दिक्कत थी, तो लाइन से शायद छूट गए थे. आखिरी गेंद होगा, स्कोर रहेगा 107 एक विकेट के नुकसान पे. ये बेटर डिलीवरी, वेरी गुड डिलीवरी. ये कोई रन मिलेगा नहीं, इसमें कोई विकेट भी नहीं गिरेगी. उसको स्लाइड करके ग्लाइड करके खेलना चाहते थे. 10 ओवर के बाद चैंपियंस 11 107 एक विकेट के नुकसान पे.
see that replay. Hotted ball has gone towards the boundary. 112 for 1 in 10.1 overs. Champions 11. Definitely playing like champions, but with that wicket of going down of Avilash, that scoring rate must have got some relief. But for SS Brothers, it's all about again getting back into the game, doing the repair work for themselves. And again, that's Avilash Tamaraparu. On to 23 now of 24 as he gives the strike to Sanjeevan, who is yet to get off the mark, having placed the first two balls of the previous over. So they need 37 or 57 balls. This will be a very, very good victory for the Champions 11 as and when they will able to achieve this one. Karthik onto him. Outside off some slashes his ball. There is no one on the deep and the ball. It will get stopped. It will definitely get stopped. There was probably the power is lacking behind that ball as he was actually going and it was hitting at the toe and the last end corner of the bat. And that's the reason why it actually got slowed down and didn't have much of the power on that ball. But whatever is the case, it's back-to-back couple of runs for Avilesh Damaraparu as he moves on to 26 or 25. This time off the back foot, there is the extra cover. Didn't do justice to the position for which he was asked to do there. But a single will be definitely picked up as the ball goes towards a long off fielder for a single. So one more ball remaining in the 11th over. The Champions 11 are now 117 for 1, needing 34 of 55 balls. Karthik will be now bowling to Sajivan, will be facing last ball. Yet to get off the mark. He is a left-hander. He can also do some good stroke making. This time a little bit away from the body while he was trying to contact the ball, but he will play the ball very, very slowly towards the mid-off fielder. Will keep the strike and also get off the mark. The score after 11 overs is 118 for 1 for Champions 11. ग्यारह ओवर के बाद चैंपियंस 11 118 एक विकेट के नुकसान पे ये बिल्कुल ही एक अच्छी साझेदारी के साथ जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई गई थी उसके बाद अभी एक विकेट जब अभिलाष चले गए हैं उसके बाद अभिलाष पारापू ने थोड़ा सा ये साझेदारी संभाला है वेंकट ने ले लिया था वो इम्पोर्टेंट विकेट अभिलाष का एक विकेट उनके नाम 1 for 13 और वो बॉलिंग कर रहे हैं उनका आखिरी ओवर उनका स्पेल का और काफी रेस्पेक्टेबल फिगर्स हैं थोड़ा सा इन होके आई थी और गेंद को शायद थोड़ा सा जल्दी खेल दिया था उन्होंने उसमें स्पिन जरूर नहीं थी और मीडियम पेसर है वेंकट लेकिन देखिए कितना स्टम्प्स को खोल के मारते हैं तो ये बहुत ही बड़ा ये चांसेस देते हैं बॉलर्स को लेकिन राउंड द विकेट काफी बॉल को आउट करने की थोड़ा आउट इन द सेंस इनवर्ड जो आउट स्विंग है वो करने की कोशिश जरूर करेंगे इसमें गेंद को बिल्कुल ढकेला है उन्होंने डीप मिड विकेट रीजन पर सिर्फ एक एक सिंगल या एक कपल ऑफ रन्स भी शायद मिला होगा यहाँ पे नहीं बस एक सिंगल मिला है एंड अभिलाष डमावारापू अभी आए हैं स्ट्राइक पे और स्कोर है 119 विकेट के नुकसान पे 3 गेंदें शेष हैं इस 12वीं ओवर में डाउन द विकेट जाके उसको थोड़ा सा खेलने की कोशिश की थी लेकिन ये वैकेंट शॉर्ट मिड विकेट रीजन पे ही गेंद जाके रुक जाएगी
और अभी एक एक रन मिल जाएगा, फिर से आ जाएंगे संजीवन स्ट्राइक पे, और उनको राउंड विकेट ही बॉलिंग करेंगे कंटिन्यूअसली वहां पे वेंकट, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट काफी कम हो चुका है अभी 3.72। अभी फिर से खोल के थोड़ा रूम और जगह बना के खेल रहे हैं, और ये स्वीपर कवर की तरफ ये गेंद चली जाएगी, एक रन फिर से मिलेगा। ये रन को ड्राई अप नहीं कर पा रहे हैं, यही मुश्किल अभी फेस कर रहे हैं एसएस ब्रदर्स चैंपियंस 11 के विरुद्ध जब वो खेल रहे हैं। और आज तो बिल्कुल उन्होंने दिखा दिया है दोनों ही मैचेस में कि उनका नाम क्यों चैंपियंस उन्होंने चूज किया है। आखिरी गेंद 12वीं ओवर का, हाँ ये करारा मामला हो सकता है, एंड दूसरा विकेट खोते हुए टेक्निकल खराबी के लिए माफी चाहेंगे। और ये देखिए कैसे ये बिल्कुल गए थे, गेंद उठी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं उठी और जाके स्टंप्स पे लगी। तो फिर दूसरा विकेट गया, तो अभिलाष डमरा पारो भी अभी बैक टू द पेविलियन हो चुके हैं, संजीवन अभी वहां पे रह गए हैं, और चैंपियंस 11 121 रन पे 2 विकेट के नुकसान पे। $124 for two in 12.4 overs. There is a slip in place, but he is bowling is so short that he's allowing it some room for micro to play some macro shots here, as he will get some more runs up to his name for an Rakesh RSCA
will give out runs. He has already given out 29 runs and make it to 31. And most of the runs has come off the blade of Avilash, who is back in the pavilion. I'm sure he was big shy of relief as he also saw the back of Avilash going back to the pavilion. So both the opening batters are now back in the hut, with Abhilash and Avilash Tamraparu in his last over are both back in the hut. So they would love to believe that this is going to a match winning knock that they have played. This is very nicely squeezed out. The ball is going towards the sweeper cover, and at the very last moment he has stopped it, and he has done justice. And they believe that now it's just 23 more runs required to win this contest. Champions 11 after 13 overs are 128 for 2. Janani. Ready. The batsman in, sir. I'm sorry for the technical overhaul here. In the Champions 11, 128 for 2, and I believe there is a wicket which Blade now.
Going down the leg side. Has the ball gone towards the boundary? Yes, it has. The equation will now come down by 18 runs because it has gone beyond the reach of the wicket keeper. He was very, very up to the stance, but those kind of deliveries will never really help the cause of any of the batsmen. I think that's a wide and then a boundary. So 5 runs must be awarded, I believe. It has really, really not helped the cause. It has actually made matters look very worse because it's a wide and also a boundary. So 17 more runs are required to win this contest. Akash Kumarji on to Rajesh again. Very, very softly plays the ball towards point as he was trying to pick up a single. Just in number 24 sports, Rajesh doesn't want to pick up any runs. 2 more balls remaining. They seriously don't want have to do anything unorthodox, anything out of the equation, but out of the off stump, he goes to play that stroke, and that will be deposited into the safe zones towards the long off fielder for a huge maximum. The bowler, Akash Kumarji, is looking at the wicket keeper as if he was asking him to bowl that ball. Loop up delivery outside off stump, took the invitation and said thank you very much. It was very safe as long as that fielder was really there. He was just a spectator as he saw that ball soaring over him and towards those grass banks for a handsome 6 runs. So just 11 runs now needed with that huge six. And 1 more ball remaining in the 14th over of Agash Kumarji. His bowling figures would say none for 12 in 5 balls with 1 more ball remaining. Of the back foot, plays it towards the fielder at point. No run being taken after 14 overs. Champions 11 are 140 for 3. Helps that ball along towards the fine leg fence for 4. And the runs are now again flowing very, very thick and fast of the bat of Champions 11. ये लोग जो भी कर रहे हैं ना बहुत सही कर रहे हैं. मणिकंदन जी गेंदबाजी उनको थमाई है लेकिन रानों की गतिविधि पे कोई विश्राम नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक बाउंड्रीज आती जा रही है. और देखिए कितनी महत्वपूर्ण और कितना सुंदर भाव से वो शॉट्स खेल रहे थे. अभी सिर्फ 7 रन की जरूरत 35 गेंदों में और अभी हम सेफली कह सकते हैं कि ये मैच चैंपियंस 11 के खाते में जरूर जाएगी और इनका आज दिन का दूसरा ये विक्ट्री दर्ज होगी. ये दूसरी बार विजय हो गए आज के दिन में. बहुत हल्के से बैट को डिफ्लेक्ट किया जहां से बॉल आई ये मिसफील्ड. अब ये एक चीज है जो बॉलर्स बिल्कुल भी नहीं देखना चाहेंगे और आप जाके ना उनके तरफ ना देख पाएंगे. अब आंखें आंखें मिला नहीं पाते हैं कभी कभी क्योंकि उनको भी लगता है कि और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी उनकी गेंद में. अभी सिर्फ 6 रन चाहिए चैंपियंस 11 को चैंपियंस बनना. ये टीम एसएस ब्रदर्स के विरुद्ध देखिए स्वीप करना चाहते थे. बॉल हल्के से आई थी. कोई भी अपील नहीं है. मुझे लगा कि बहुत बड़ी अपील आने वाली है लेकिन वो जो डीप गली वाले फील्डर हैं उन्होंने एक्चुअली बहुत बड़ी अपील की लेकिन अंपायर ने तो शायद उनके तरफ देखा ही नहीं होगा. 2 गेंद बाकी है 15 ओवर में. इस ओवर में अभी 7 रन है. रिवर्स स्वीप करके मारने की कोशिश. कुछ तो कीजिए. कुछ अलग कीजिए. अभी सिर्फ 4 रन है की जरूरी. एक स्ट्रोक दूर है चैंपियंस 11 इस मैच को जीतने से और फाइनल नेल कोफिन में ठोकने के लिए. आखिरी गेंद 15 ओवर. डाउन विकेट जाके मारा उसको ओवर कवर एक्स्ट्रा कवर के दिशा में लेकिन 4 रन नहीं मिलेंगे. एक फील्डर है मौजूद तो सिर्फ 1 रन मिलेगा उनको. कपल ऑफ रन मिलेंगे शायद. अभी ये ओवर हो गया खत्म. 148 ब्रो फॉर एंड 3 चेंज था ना. और 3 रन की है जरूरत चैंपियंस 11 को जीतने के लिए.
और मैं यहाँ बात पे शायद मैच हो गया है खत्म। ये जो हम टीजर दिखा रहे थे उसके बीच में एक्चुअली हो गया था खत्म। तो ये चैंपियंस 11 बन गए चैंपियंस आज के मैच के by 7 wicket. So they have won this match by 7 wickets versus SS Brothers, the Champions 11. They have gone on a canter with 29 balls remaining. That's the kind of victory margin they have inflicted on SS Brothers. So all handshakes, all customary handshakes. Avilas from Champions 11, what destructive batting from he is 82 of 37 balls, 6 fours and 8 huge and humongous sixes. Look at it, strike rate 221.62. It is an absolutely cleaning performance from Avilash, and he's clearly today's man of the match in this equation between SS Brothers and I'm sure and SS Brothers and Champions 11. And you cannot you cannot take that name out of the equation, isn't it? They have clearly been a champion, and today they have registered their 2 wins out of 2 matches that they have played. But for SS Brothers, they have won they have played 2 matches, won one match, and lost this match which is just finished versus Champions 11. So thank you so much everyone for joining us for today's coverage of all the 3 matches. Until next time for tomorrow, take care of yourself and have a very good evening ahead. Cheers and take care.